He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha, and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra.
भैरव प्रचोदयात्। ॐ ऐं क्लीं क्लीं ह्रीं 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 सः वं आपदुत्तरणाय अजमालापदाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिद्र्यवित्सञ्चनाय श्रीमहाभैरवाय नमः। ॐ ऐं क्लीं क्लीं ह्रीं 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 सः वं आपदुत्तरणाय अजमालापदाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिद्र्यवित्सञ्चनाय श्रीमहाभैरवाय नमः। ॐ ऐं क्लीं क्लीं ह्रीं 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 सः वं आपदुत्तरणाय अजमालापदाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिद्र्यवित्सञ्चनाय श्रीमहाभैरवाय नमः। ॐ ऐं क्लीं क्लीं ह्रीं 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 सः वं आपदुत्तरणाय अजमालापदाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिद्र्यवित्सञ्चनाय श्रीमहाभैरवाय नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहम ब्रह्मास्मि। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू द 138th Q&A session. And good to see, just a day to go, बस और एक दिन for the celebrations. And I can see some people have already reached, some people are traveling, some people are in the air, some people are on the road, some people are on the tracks. So all possible methods, people are just being here. And yes,
What I can say is like the video that you saw, it is not even of last year, it is of the previous year. But this year, you see what happens. Because the image itself that is being created, the way it has come out, you should be there to see it. That's it. कोशिश जरूर करना वहां रहने के लिए. At least the people in Hyderabad, I'm talking them, okay, the people, those who are far off, due to some reasons, they could not make it. But for the people, those who are here, and that's, and chalo. So that we will talk anyways. So it being a Q&A session, any questions? No, very good. Young bloods are Yes. with questions. Go ahead. Okay, Utkarsh, please unmute yourself. हाय सर, Hi. मेरे पास बताओ. 2 क्वेश्चंस हैं. एक Very- है, मुझे एक गिटार मंत्र के कैसे बारे में. सीखोगे वो नहीं बता सकता भाई मैं. नहीं, गिटार में सीख लूंगा यूट्यूब से, कोई बात बता. चलो अब दूसरा वाला पूछ लो. नहीं. ओके. तो एक मंत्र के बारे में मुझे क्वेश्चन है. आपने मुझे वो 3 साल पहले यूट्यूब के थ्रू शेयर किया था. हाँ हाँ. तो उसको, उसके टाइटल में उसको मूल मंत्र बोलते हैं, ओम सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः. भगवते तो नमः. हाँ, तो ये वाला मंत्र जब से आपने शेयर किया है, तो मैं जब भी इसको सुनता हूँ बहुत काम महसूस होता है. एंड इसके डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में दिया भी हुआ है कि ये अनमैनिफेस्टेड फॉर्म का मंत्र है, पर ब्रह्म का. तो मुझे आपसे पूछना था कि इस मंत्र का ओरिजिन कहाँ से हुआ एंड ये एक्चुअली किसका मंत्र है, ओके. तो एंड ये इसके कोई मंत्र का रूल्स हैं कि नहीं. बिकॉज मुझे जब भी काम होना होता है मैं तो इसको बोलता रहता हूँ. ओम सच्चिदानंद परमात्मा. ओके. किसने लिखा, कैसे आया? देखो, परब्रह्म के बारे में वही लिख सकता है जो परब्रह्म को जाने या तो समझे, या तो परब्रह्म खुद. तो व्याख्या देखा जाए तो इसका, अगर आप ये सवाल मुझे पूछ रहे हो, इसका मतलब आप तो ढूंढे भी होंगे. यू डिड नॉट फाउंड, सो यू आर आस्किंग मी नाउ. सर्च तो किया होगा, क्योंकि यंग जनरेशन डज नॉट जस्ट कम विथ क्वेश्चंस. They do their research, and ultimately when they don't find a way, no, I am not able to now, what? Well, that's good. See, that's the exploring mind, right? So that is good. अच्छा, क्या मिला आपको जब आप सर्च किए? तो क्या मिला आपको? मुझे ऐसा, पहले तो मैं मूल मंत्र सर्च कर रहा हूँ तो कुछ और ही आ जा रहा था, उससे रिलेटेड तो आया ही नहीं. उस मंत्र को एग्जैक्टली डाल दो तो रैंडमली कुछ भी आ रहा था. तो इसीलिए हम लाइक आपसे पूछ लेता हूँ सबसे बेस्ट. See, there are still some mantras that don't appear to everyone, right? Did you understood that? ये समझने वाली बात है कि इतने बड़े दुनिया में इतना प्यारा सा मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन ढूंढने पर भी नहीं मिलता वो मंत्र. क्यों है ऐसा? So that's something that you have to be very, very aware of. The reason is, these kind of mantras, when these appear in front of you, उसका कारण यही है कि ये मंत्र आपके लिए है. Then only you will find it. And you won't search it, it will appear in front of you. That's how it works. And when you're asking like who is, इसका रचयिता कौन है? Okay. So रचयिता का तो नामकरण नहीं है इसमें. When we, even if you ask me to go look back, I don't find a particular name who might have brought it. But हाँ, ये माना जा सकता है कि ये परब्रह्म का मंत्र, again it comes from the आगमस. मतलब स्वयं शिव के मुख से निकला हुआ मंत्र है ये. तो जब उनको ये प्रश्न किया गया था कि परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो उसका सरल विधि एक सांसारिक व्यक्ति के लिए कौन सा मंत्र हो सकता है, तब ये मंत्र आया था. सो अब सोच लो कौन उसका रचयिता है और कौन लिखने वाला. सो इट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम, क्योंकि जितने भी हम आगम के बारे में बात करते हैं वो सारे शिव के बोले गए हैं. यस, somebody must have written it down. उसके लिए विवाद है थोड़ा उत्कर्ष, इसीलिए मैं किसी एक पर्टिकुलर नेम नहीं लेना चाहता. थोड़े विवाद है उसके ऊपर. क्यों बताता हूं? बिकॉज व्हेन इट वाज गिवन, देयर वेयर, you know how many people were sitting in front of him.
So when somebody started writing that, क्योंकि ये इतना बृहत है, so they all started teaching that mantra to their immediate followers of them, जिसे कहते हो. Then one fine time, one of the person asked, like, I went there, they are also teaching the same. I went there, they are also teaching the same. So who wrote it first? तो किसकी रचना है ये? Now when they said like, okay, everything rachna is done by Shiva itself, they were, no. But who wrote it down? Means who brought it to us? Then he said, I. The other person said, I. The other person said, I. And there where the confusion started. इसी को लेके इसी वजह से उस चीजों को किसी की नामकरण नहीं दिया गया है. बिकॉज द रीजन बिहाइंड इज, आप पूछ सकते हो कि ऐसे तो बहुत सारी चीजें शिव ने कहा है और किसी ने अपना नाम दिया है. व्हाई अबाउट दिस? द वेरी सिंपल आंसर टू दैट, उत्कर्ष, इज whenever somebody writes anything, they write it as per their understanding, as per their experience. This mantra is as is. Okay. Agar, let's say I tell you I write a paragraph and I send it to you, or write a book or send it to you, you can tweak it, right? Copyright check kar lo, acha ye word change kar lo, and now AI doing is everything. So you just change that, then what happens? That becomes yours. You put a name on that, you get it. But which has not been copied, usko kya kahoge? And is it not a beautiful mantra? हाँ, बहुत काम because होता the है. moment you start singing that, it actually, वो कहते हैं ना, chord का low bass पे आ जाता है वो. So that's how it comes down. But नहीं है. Even though you find कि some name has been written, there will be a contra name available to that also. So good that you still remember that and you are still doing it. मैं बहुत सारे से पुराने प्रोसेसेस करता रहता हूँ. इसका कोई पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना? बिकॉज नहीं है. अगर वो होता ना, मैं आपको 2 साल पहले नहीं देता था. Because I know who you were 2 years back. मैं अभी भी वैसे ही हूँ. Now really, if you go back and look at that fellow, that complaining guy, you remember that complaining guy? बिल्कुल. What happened to him? मैच्योरिटी. उफ, बच्चा बड़ा हो गया कहते हैं हरि भाई. मैच्योरिटी आ गई, चलो अच्छी बात है. बट इन अ गुड वे और नॉट? हाँ, एब्सोल्युटली. मतलब तुम्हें को देखना है 2 साल बाद जब घर जाऊंगा तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, वही है जो गया था घर से. नहीं, गिटार तो बजाना सीख चुके हो, लेके बजाना जाके. बोलेंगे तो वो नहीं है, क्योंकि जब गया था तो उसको गिटार बजाना नहीं आता. And I heard that Hari Bhai got inspired from you and he has got a guitar. हाँ, वो तो क्लासेस भी ज्वाइन कर लिए. So all the people be happy because next time when the session happens or something happens, Hari Bhai is going to play the guitar. और ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा. Because when I declare in public, Hari Bhai has to do it. Okay, so that was your first question, and as I said, उसका मूल अगर आप किसी को भी पूछना चाहते हो, so I will directly say it came from directly the mouth of Shiva, and as it has not been contaminated, nobody has claimed its name onto it, and even though claim has became a controversy. Okay, and that's the reason if this mantra appears, there are many such mantras which you won't get as is, means जैसा का वैसा आप तक पहुंचे, और ना ही आप ढूंढ के निकाल सकते हो उस चीजों को. So if such thing has been given to you, utilize it to the max, जितना हो सके. Because there are certain mantras जो आपको शक्ति देता है. कुछ मंत्र होते हैं जो आपके अंदर भक्ति बढ़ा देता है. कुछ होते हैं जिसके मंत्र आपको पता चल जाता है कि अरे something is changing within. And there are some mantras that settle you down. And I believe these grounding mantras are more important. उड़ना तो कोई भी उड़ लेगा. चुप बैठना किसको आता है? Who can sit silently is the master actually. क्योंकि शरीर को तो बिठा दोगे, मन को कौन बिठा सकता है? So that's the master. Okay, and these kind of mantras are for. अब लेकिन अब क्या होगा जानते हो? Next the thing will come up is, why don't you give us that mantra to all of us? उसका समय आएगा, वो मिल जाएगा आपको. शायद ये समय लेके आ रहा है.
ओके, विल सी दैट। ये हमारा ये प्रोसेस खत्म होने दो, विल सी। ओके, even I'll try to tell you the background of it and even the meaning or whatever is required for that. Okay, so what is your second question? सेकंड क्वेश्चन, सर आपने एक एनर्जी वाला प्रोसेस दिया था कि जब भी हम लोग टायर्ड हो तो हम लोग अपने फिंगर्स को ऐसे नाभि पे रख करके ब्रीदिंग करके अपनी एनर्जी अप कर सकते हैं। Yes, आपके पास वैसे कोई ऐसा प्रोसेस जो नींद कम कर दे? मैं 21 डेज के लिए 5 o'clock पे उठ रहा था, लेकिन आज भी मेरे को वैसी ही नींद आती जितनी पहले दिन में आ रही थी। आई थॉट 21 डेज होते होते आदत पड़ जाएगी, लेकिन नहीं। okay. कुछ तो हमारे वहां पे कहावत है उत्कर्ष, हम्म। कुछ लातों के होते हैं और कुछ बातों के, तुम किसके हो वो देख लो। तो मेरे से सुबह उठना होता ही नहीं, कोई बात नहीं। पता नहीं कैसे The उठ रहा हूँ मैं। reason. Have you tried to locate the reason behind it? Why are you not able to get up early in the morning? What are the potential reasons? पोटेंशियल रीजंस, एनर्जी या तो कम होगी मेरी, रात में लेट लेट तो सोता हूँ, उस पर मैं कुछ कर नहीं सकता बिकॉज 12 o'clock के बाद ही सोना है मुझे। No. So ये एनर्जी का प्रॉब्लम है या सोने का प्रॉब्लम है, वो बताओ। सर 12 से तो वो कम नहीं होने वाला बिकॉज मेरा वर्क रहता है ना कल, तो मैं उसको और कम करना नहीं चाह रहा हूँ। कभी मीटिंग होगी तो इशू हो जाएगा मुझे, इसीलिए। Okay, no issues. So I get it. So your job role demands that you should be हम्म। there. Okay. हम्म। So कितना बजे उठते हो वैसे? अगर मुझे नॉर्मली बोला जाए तो 8 o'clock, और सोता फिर मैं 1-2 पे हूँ। फिर वो अच्छा, तुम्हारा ऑफिस का वर्क कब खत्म होता है? ऑफिस का अगर 12 पे खत्म होता है तो 1 घंटे 1.5 घंटे इसको प्रैक्टिस करता हूँ। किसको? गिटार को। ओके, चलो ठीक है, दैट्स योर मी टाइम, दैट्स व्हाट यू कॉल इट। ओके, फिर सुबह कितना बजे उठते हो? 8-9 जब आँख खुल जाए। अच्छा, 8-9 तक सो जाते हो तुम? अच्छा, 2 से। ओके, तो क्या चाहिए? मतलब बाय 6 व्हाट टाइम o'clock डू तक यू वांट टू गेट अप? मैं 5:30 से 6 के बीच में उठना चाहता हूँ, देन जैसे यू स्कूल विल के ओनली टाइम बी पे उठता था। स्लीपिंग 3.5 to 4.5 hours. अगर बॉडी को एनर्जी का इशू ना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, see, you have to respect the gift called as body that has been given by the divine. Don't ओके। disrespect that. If the ओके। body is sleeping, it knows something. उसको कुछ पता है, हम्म। उसे पता है कि ये शरीर को इतना देर तक सोना चाहिए। बट यस, अगर वो आलसपन से हो रहा है, इफ इट इज लेजीनेस एंड यू आर स्लीपिंग, देन वी कैन वर्क ऑन दैट। मैक्सिमम टाइम लेजीनेस ही होती है। एक बार Laziness. अलार्म बजा Okay, फिर लेट गए। very good. Absolutely fine with that. See, that's what I'm saying. You have not looked into the core of it. ठीक है, लेजीनेस आता है, why not in the night? Why you are getting lazy in the morning? सोचो, see, it is not even spiritual, it is absolutely psychological game that you can play. Okay, so tell me why you don't want to get up? Why I don't want to get up? अगर सुबह देखा जाए तो अभी अभी के रिस्पेक्ट में तो सर्दी रहती है सुबह, तो ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं करता। ये तो प्रोसेस है, इसलिए मैं उठ जाता हूँ। तो वंस द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, No, no, इट्स no, मोर no. लाइक कि अब क्या करना है सुबह, तो वापस से Okay, लेट जाओ। ठीक है, even okay with that, but what do you do after getting up in the morning? मैं प्रोसेस का बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद का बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैक्सिमम टाइम तो मैं ऑफिस का या तो वर्क उठा लेता हूँ, वरना अपना कोई स्किल सीखने बैठ जाता हूँ मैं। Okay, हम्म। so the very simple thing is, in the morning you don't have anything so exciting to do. That's why you sleep. In the night, if I say आपका काम होने के बाद आप 12 बजे सो जाओ, you cannot sleep. I can write it down. You cannot sleep. I'm not saying you will not sleep. I will say you cannot sleep. एब्सोल्युटली। Why? Why? What is the reason? The इसको reason सीखने is में जो very इंटरेस्ट simple. है। Do you know where your love is? Where your attention goes? It's very simple. If you really want to do that, change the timing of learning the guitar. ओके। So रात के 12 से 1 बजे का सेशन नहीं है, सुबह 6 से 7 बजे का सेशन है तुम्हारा गिटार बजाने का।
पहले मैंने ये सोचा था, बट फिर मुझे लगा सुबह सुबह बजाऊंगा, लोग जो सो रहे हैं वो भी उठ जाएंगे। वैसे तो 12 मैं बजे के बाद अच्छी नींद आती है, तब बजा के भी उठा ही रहे हो लोगों को तो। ये ये तो हॉस्टल है, यहाँ तो लोग 2-3 बजे तक ही सोते हैं, सो रात में तो चल जाता है। तो वो भी आपके आदत के वजह से अच्छे हो जाएंगे, वो भी जल्दी उठना शुरू करेंगे। हम्म, ये भी पॉइंट, बिल्कुल। Right? So change, you see, the reason why we don't get up is because of we don't have a motive to get up. कोई मोटिवेशन हम्म नहीं है उसमें। सो क्या हम्म करता है, इट्स लॉग्स, वो कहते हैं थोड़ा और सो जा और सो जा। कोई नहीं कहता कि तू और 5 मिनट सो जा, हम ही सो जाते हैं। हम्म लेकिन अगर आपको सुबह फ्लाइट पकड़ना है, हम्म वो कड़क की सर्दी हो रही है, अच्छा कंबल है, आग जल रहा है पास में, तुम सोओगे, उठ के भागोगे। उठ के भागूंगा। The simple thing is what your intention is at that time. Create such an intention that will not allow you to sleep, or else change something. Change that you want to do very much, जो आपको बहुत पसंद है, ओके। उठ के करो। उस टाइम का समय बदल दो, हम्म फिर देखना समय से पहले आंख खुलेगा, क्योंकि गिटार बुलाएगा तुमको। हम्म Right? So this is not rocket science. This is just tweaking of the things that we are doing in our lives. करके देखो, मंत्र जप करने का कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सिंपल सिंपल टेक्निक से हो जाएंगे। जस्ट प्रायोरिटी चेंज कर दो, ओके। एंड यू सी यू विल गेट अप। हम्म एंड एट योर एज, let's say there is something more exciting that is happening in your life, then will you sleep or you will wake up and run? Wake up and run. So that means there you don't have a problem, the body does not have a problem. हम्म The thing is the body does not have an intention to get up. वो एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट आ गया तो you will throw away anyways and you will just run. So create that, वो कर लो। ओके। हम्म And there are million techniques that they have given, and मेरा सबसे अच्छा टेक्निक जानते हो ना, I might have shared in the video। अभी तो कैसे भी पैसे कमाने लगे हो तुम, ठीक है, 500 का नोट पकड़ना हाथ में सोने से पहले, ठीक है, और उसको बड़े प्यार से देखना, बोला रहेगा अरे वाह कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर नोट, से देखना उसे, ठीक है। फिर रात में उसको तकिए के नीचे रखना और कहना कि मैं इतना बजे उठूंगा। कितना बजे? 5:30 या 6 बजे, ठीक है, 6 बजे लगाते, मैं 6 बजे उठ जाऊंगा। 500 का नोट, मैं 6 बजे उठ जाऊंगा, रख दिए। आराम से सो जाओ, बिल्कुल मत उठो 6 बजे, मैं कोई मनाही नहीं करता हूं, सो जाना, आराम से सो जाओ। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी उठो, बिल्कुल अपने आप से कोई फाइट नहीं है। सिर्फ एक ही काम करना, वो 500 का नोट फिर निकालना, उसे देखना, बोला अरे 500 का नोट कितना सुंदर है, उसको जाके किसी को दान कर देना। क्यों? बिकॉज यू डिड नॉट केप्ट योर प्रॉमिस टू योर ओन सेल्फ। दूसरे दिन क्या करना जानते हो? 2 500 के नोट लेना, उसको भी वैसे देखना, कितना प्यारा नोट है, कितना प्यारा नोट है, फोल्ड करना, पिलो के नीचे रखना, सो जाना और कहना मुझे कल 6 बजे उठना है। फिर बिना अलार्म लगा के सो जाओ, फिर मस्त सो जाओ, उठो 8 9 10 बजे, जितना बजे। उस दिन तो मैं कहता हूं 1 बजे तक सो जाओ। फिर उठना, क्या करना, वो 2 नोट निकालना, उसको बड़े प्यार से देखना चाहिए, कितना प्यारा नोट है, फिर क्या करना है, उसको लेके दान कर देना है। तीसरे दिन 3 नहीं, वो डबल होते जाएगा। थर्ड डे को 4 गांधी जी आने वाले चाहिए, उसको प्यार से देखो, सो जाओ सो जाओ, कितना प्यारा है, फोल्ड करके पिल्लो के नीचे सो जाना। फिर बिल्कुल अलार्म मत लगाना। कितना बजे उठोगे? 5 बजे, समय से भी पहले। करो, तुमको टेक्निक चाहिए ना, टेक्निक लो। लेकिन बड़े दुख की बात क्या है जानते हो इसमें उत्कर्ष, मैं जब भी ये टेक्निक किसी को कहता हूं, मैं पहले कहता था फाड़ देना उसे, मैं बोला क्यों बेकार, नष्ट क्यों करना है, किसी को दान कर दो, किसी की भलाई हो जाएगी। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, मैं कहता हूं क्या आपका अपना कमिटमेंट अपने साथ इतना बड़ा नहीं है कि जितना बड़ा कमिटमेंट आपको पैसे के साथ है, उतना बड़ा कमिटमेंट आपको अपने साथ नहीं है? वो एक पैसा जो आप 4 नोट निकाल के दे देते हो, वो आपकी नींद उड़ा देती है, और आप खुद को कहते हो कि मुझे उठना है, आप उठ नहीं पाते। किस तरीके का कमिटमेंट है हमें अपने आप से?
सिर्फ 4 नोट हमें जगह देते हैं, तो हमने अपने जीवन में अपने से ज्यादा उस पैसे को ऊपर चढ़ा रखा है। कोई बुलाएगा नहीं, कोई उठाएगा नहीं, आप खुद उठ के भागोगे। भाई 4 नोट कौन दे गांधी जी का? तुम्हारा किस्मत अच्छा है, जानते हो उत्कर्ष? मैं पहले 2000 के नोट बोलता था। अभी नहीं है तो 500 से ही चला देते हैं। तो क्या करना है आज रात में? 500 का नोट रखना है। और फोटो भी उठा के सबको भेजना ग्रुप में, ये देखो 500 का रखा एंड आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। और जब दान करते हो ऐसे सेल्फी लेके दान करना, बोला 500 गए। देखो यही कहता उत्कर्ष, हम जुआ खेलते हैं, बट एवरी वन ऑफ अस प्ले दैट गैम्बल, लेकिन संसार के साथ खेलते हैं। क्या होता है जानते हो इससे? अगर मैं जुआ संसार के साथ खेलता हूं ना, इफ आई प्ले गैम्बलिंग विद द वर्ल्ड, अगर मैं जीता तो संसार मेरा, वो अलग परेशानी है, माया साथ आती है। अगर मैं हारा तो मैं संसार का, फिर प्रॉब्लम, फिर संसार में गया। तो ये जो जुआ खेलते हो आप, व्हेन यू आर प्लेइंग दिस गैम्बल विद द वर्ल्ड, वेदर यू विन और लूज, यू लॉस्ट। इसी को बदल दो, यही जुआ भगवान के साथ खेलो। बोलो जुआ अगर मुझे खेलना है तो मैं, कोई भी भगवान जो आपको पसंद है, बोलो मैं शिव के साथ जुआ खेलता हूं। क्यों ना? अगर मैं हारा तो मैं उनका, अगर वो हारा तो वो मेरा। तब क्या होगा? So when we are playing this gamble of the mind, let us bring that consciousness into play. The consciousness where I know that my mind is triggered even by money. That means the priority in my life is money. Nothing wrong in that. But that gives you a power in your hand to trigger your mind whenever it wants to. उसको किसी भी तरीके से आप समझा सकते हो, क्योंकि अगर उसको प्रायोरिटी पैसा है तो उसको पैसे समझा सकते हो आप। बट एट द सेम टाइम लुक एट एज एन ऑब्जर्वर टू दैट। यार सच में माई कमिटमेंट टू माई सेल्फ इज मोर देन मनी और लेस देन मनी। तब देखना कोई पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई नोट रखे पिलो के नीचे सोना पड़ेगा आपको। That's where that commitment, that is called as creating the right kind of habit. हमको क्या होता है, हम क्यों उठ जाते हैं सुबह सुबह? That's just a commitment, nothing else. See, whether a person is whichever way they are, it's just because of the commitment they have towards their own selves, right? So all these are not even spiritual realm questions, but no problem. You can bring any questions to this, because I just cannot say नहीं spiritual मतलब सिर्फ वही बात करेंगे, नहीं, don't worry. Even if there are problems that you people are facing, there are issues that you need help with, why not? So do you think all these things will help? अप्लाई करूंगा, हेल्प करेगा। अगर नहीं हुआ तो इससे भयंकर है मेरे पास। अगर ये भयंकर लग रहा है तुमको तो नो प्रॉब्लम, जस्ट डू दैट। यस, एक और क्वेश्चन था, ये मम्मी का था मेरी क्वेश्चन। मैंने व्हाट्सएप पे लिखा था, शायद आप बिजी होंगे उस समय। तो मेरे पापा को एक ड्रीम आया था, आई थिंक यस्टरडे। तो वो बोल रहे थे उनको पहले 2 साधु दिखे थे, उनके पास त्रिपुंड था बट वो सिंदूर का था, ठीक है। एंड देन उसके बाद उनको दिखती हैं कि शक्ति है जो काली माँ, वो उनकी तरफ चलते हुए आ रही है एंड शी इज होल्डिंग अ स्वॉर्ड। ओके। एंड क्योंकि उन्होंने उनके पहले पूजा की है, सो वो उनको उस मतलब रूप से जानते हैं उनको। तो all he did was he just lied down on her feet and after lying down उनके मतलब एक थॉट आता है कि माँ इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी, चलो उनके पैर दबा दूं मैं। So he started massaging her. So after some time उन्होंने अपनी स्वॉर्ड नीचे रख दी, she became calm and then she went away and the dream ended. तो मतलब पापा ने मुझे बोला था कि पूछो मतलब इसका एग्जैक्टली क्या इंडिकेशन देना चाह रही थी वो, मतलब क्यों वो गुस्से में थी।
Okay. See, one thing, it cannot be such a mental construct where you see so many things in a sequence and you do it. Okay. The second thing is he was aware of what he was doing. और आप उनको पूछना, he can clearly tell you, because when you see a dream, it becomes hazy. Even if when you wake up in the morning, सुबह उठ के जब आप बोलते हो तो वो hazy हो जाता है. You cannot exactly tell what it was. उनको पूछना, he will be able to clearly tell you the colors of all the things, what was all around, everything in detail. वो भूलेंगे नहीं उस चीज को. That itself indicates that ये दैविक जो क्या कहते हो उसको, मीन्स ग्रेस ऑफ द गॉडेस कह सकते हो इसे. सो दिस इज एब्सोल्यूट द ग्रेस ऑफ द गॉडेस, बिकॉज मैंने आपको फिर पहले कहा है कि जनरली व्हेन यू सी द डेइटीज इन योर ड्रीम, वो जनरली मेंटल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है. मेंटल कंस्ट्रक्ट कैन ओनली हैपन थ्रू द थिंग्स ऑफ डेली लाइफ दैट हैज मीन्स आपको बहुत गहरा आपके ऊपर असर छोड़ दिया है दिन भर का. That will become your dream. It can be a person, place, thing, whatever it is. लेकिन जब दैविक ऊर्जाएं ऐसी चलती है ना, और हमें पता है उन्होंने आजकल की नहीं, उन्होंने कई सालों से साधना कर रखी है. Might be sometimes right, sometimes wrong, but लेकिन साधना तो की है उन्होंने. Okay? So when all these indications are coming, that is a good sign. Good sign क्या हो सकता है इसमें? The good sign is the Devi walking towards you. That itself is a good sign कि अभी दिव्यता की मेरे ऊपर वर्षा होने वाली. Like there is a grace of the goddess, because now I don't see that I am going there. ज्यादातर समय पे लोगों को जो पहले जो शुरू होता है, they will see that they are going somewhere. मंदिर गए या पहाड़ों में चले गए या वहां चले गए. See, these are indications, right? So पहले उनको ये दिखाई देता, तुम हंस रहे हो क्योंकि तुम्हारे साथ हुआ है. मम्मी बताती थी पहले. हाँ. So now what happens is, in that case, when she is walking towards you, whether she is in an angry form also, the best thing that he did was sitting down at her feet. That itself is good. The third thing that he noticed was she calmed down. तो इसका मतलब यह है कि दैविक ऊर्जा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऐसे कर्म रहे हैं जिसके वजह से शायद देवी कुपित थी या तो दंडित करना चाहती थी. जब मैं ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, कई सारे लोग कहेंगे कि देवी कुपित और कैसे. नो, डोंट वरी. नेचर, यू हैव टू अंडरस्टैंड नेचर. नेचर, when it is a nature which actually helps that small little blade of grass to grow and even that smallest little flower to bloom, it is also the same nature which creates tornado. Is the same nature who creates such devastation. So that means शक्ति के दोनों स्वरूप हैं. एक शांत स्वरूप है, एक शक्ति का स्वरूप है जो इसमें वो ध्वंस करने के बाद. So when she is coming, first is grace तो है जिसके वजह से वो आई, but that moment she was not also in a very calm state. आप लोगों के पास दो तरीके से जा सकते हो, एक तो पीटने के जा सकते हो या तो प्यार करने के लिए जा सकते हो, right? So this was that case when she was walking and she was holding a sword. Very rare to see that, क्योंकि काली के हाथ में हमेशा खड्ग देखोगे, कभी sword नहीं दिखते. So that is how when she appeared in that space, जानते हो कारण क्या है? जब हम खड्ग का अस्त्र चढ़ाते हैं या जब खड्ग की माला की जाती है, उस माला में मीन्स द खड्ग दैट इज होल्डेड बाय काली, उसको ऐसे अभिमंत्रित किया जाता है कि वो तुच्छ प्राणियों के लिए नहीं यूज होगा. मीन्स दैट्स लाइक किलिंग ए रैबिट विथ ए कैनन. कुछ नहीं बचता है उसमें. Okay, so that kind of energy is not needed. Just a little bit of thing is okay with it. So वो शस्त्र बदल जाता है उस हाथ में तब. But when she came, अच्छी बात इन्होंने ये की that he fell down at his feet. उनके पैरों में जो गिर गए, that was, ये है उनके जो सही गुरु कभी रहे होंगे, या तो उनकी जो सही साधना रही होगी, या तो उन्होंने कहीं भी किसी भी तरीके से जो अच्छे कर्म कर दिए ना, ये बुद्धि बन के वो समय पाई और वो पैर पे गिरे. And then what happened? वो जाने अनजाने में क्षमा प्रार्थना हुई. और वो क्षमा प्रार्थना से she is again a mother that we call, right? शक्ति है उसमें रोष भी है, लेकिन वो उसके बावजूद भी एक माँ है.
It's just like a small little kid who has done some mistake, comes to you running and touches your feet. Ma, galti ho gayi. Then she calms down. Very good, Utkarsh. No problem. It's just a blessing. सर मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस पूछ लूंगा तब तो अभी आई थिंक आपने शायद पढ़ा था ना, जो मुझे एक सेज दिखे थे हिमालय जैसी जगह पे, तो वो कौन थे? मतलब इट फेल्ट लाइक आई हैव नोन हिम फॉर एजेस, बट मुझे नहीं पता वो कौन है. That will be there. You see, that's what Utkarsh we keep on saying ना, जहाँ पे when you call them as a light beings, right? So ऐसे रहे हैं. They have been. It is not our first birth. None of us. ये हमारा पहला जन्म नहीं है. The only thing is we have been guided throughout the ages now. वो अपीयर होते हैं, वो हमको कुछ सिखाते हैं. अगर हम सीख गए तो वही जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा. एंड वी विल, जो कैवल्य कहते हो जिसे, वो प्राप्त हो जाएगा. एंड यू आर मोक्ष हो गया, आपका मुक्ति हो गई. बट हम कोई होते ना, कुछ लातों के भूत होते, तो वी डोंट अग्री विथ वन गो. इसे ना वी हैव टू डू समथिंग मोर. अच्छा फिर से आते हो. बट दे स्टिल कीप ऑन गाइडिंग यू. You know why? Because they see some goodness in this part of you being there. That whenever, you see, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, whoever is sitting in this room, देखो गुस्सा हम सबको आता है. ऐसा नहीं है कि हमको गुस्सा नहीं आता. That would be absolutely absurd thing मैं बोलता हूँ. अगर गुस्सा तो आता है, but at the same time, we don't want to hurt others. That's the first quality of everyone sitting in this room. हमारे मन में वो द्वेष, गुस्सा आ सकता है, लेकिन वी डोंट वांट टू हर्ट पीपल इन एनी वे. यहां तक कि इस हद तक को मैं बोल सकता हूं, इवन इफ समथिंग हैज रॉन्ग हैपेंड टू यू, यू स्टिल फील विद इन योरसेल्फ, यू से यार ठीक है गलती हो गई, लेकिन भगवान इसे क्षमा कर दे, इसको बुद्धि दे, या तो ठीक कर दे उसको, मेरा कुछ भी उसके ऊपर ना गिरे. डू वी डू दैट और नॉट? व्हाट डज दैट मीन? इज इट आई एम सेइंग बिकॉज आई वांट टू, क्या कहते हैं उसे, butter you up? No. If that was the case, one of you would raise your hand and say, this is wrong. I am still okay to that. I am ready to listen to that if that is wrong about you. But I don't think so. Reason क्या है उत्कर्ष उसके पीछे? Because until and unless you have that kind of heart, right, you cannot start your journey on this path. And the kind of experience when it shows up, that means still the guiding force is walking along with you. हमारे पास दो तरीके के परिवार होते हैं. एक होता है जो हमारा परिवार है, the immediate family that we have. दूसरा होता है बृहत परिवार. बृहत means, this is a pretty amazing analogy actually. It's just like when everything started, we created a family. That family is still continue to come along with us. और जैसे हर एक के घर में, all of us, आप मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, आप सबके घर में कोई ना कोई दिव्य पुरुष हो चुका है. You might not know, you might not even have a record of that, but it is not possible, because in the entire lineage there will be people, those who will transform themselves on this path, right? Who are those? And if you don't believe that, then अपना गोत्र देख लो, उसी से पता चल जाएगा, किसी ना किसी ऋषि या महापुरुष के साथ जुड़े हुए ही हो. That means you are coming from that lineage. So who has the responsibility to guide his lineage? Start हुआ. So if there is someone through whom he knows you from your different lives, don't you think when you meet them, you will feel like, I know this person? Yes. So that is the case. Generally, what happens is, majority of the cases, जिनके साथ हमारा गोत्र जुड़ा हुआ होता है, they become the first people to guide us. Then there are many light beings जो अभी भी हैं, जो जग कल्याण के लिए, या तो the people those who want to walk on the right path, उनको help करने के लिए, they are just there. So they are helping you in that way. And that's the reason you feel like you know them.
Okay. Okay. So now just go back in time and remember the first time you talked with me. You Hmm. don't even remember, right? But what LinkedIn. happened to you on that day, the moment I talked with you over phone? अच्छा, over phone. Hmm. What did you felt on that day? You don't forget that. What did you said on that day? आपने पूछा था तुम्हें क्या करना है इस रास्ते पे चल के. I said I wanted to become just like you. Why did you said that on the first instance? It was not from here. मैंने सोच के तो नहीं बोला, दिमाग से तो नहीं आया था ये. So what makes you say that? It's very simple. Means वो कहते हैं ना कि it takes time for the fruit to grow and ripen, but it falls in a second. Hmm. So similarly, दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखने के बाद, परखने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद, बुद्धि लगाने के बाद, तर्क लगाने के बाद, माया जोड़ के जो कुछ करना है, whatever you want to do, after doing all that, then you find someone and say, yeah, I should become like that. Why so? So now you know it. Because your journey over that past 2 years, it was not easy. At times you felt like somebody has left his hand from you, right? But when you look back now, what do you say? All for the good. Now you can join, means वो कहते हैं ना, join the dots. Dot. And now you realize, oh, nothing was actually, I was never been abandoned. It was always guiding. I was not looking at it. That's it. Hmm. कभी आपके सामने ऐसा हुआ होगा ना कि आप कभी रोड पे जाते हो और रोड के उस तरफ आपका कोई दोस्त खड़ा है. It's a moving crowd. And वो वहां खड़े होके हाथ, he's just waving at you. You don't see that. But your friend is all around. Hmm. And suddenly you look and, oh, arey, हाँ. But you have been waving for the past 5 minutes. And that's how it happens. So it's good. See, you are walking, you are doing your hard work on this path. You are trying to make up with life in the worldly way as well as in the spiritual way. Grow, no problem. Any question appears, we'll be there to help you with that part. So don't worry. Just think of from where you started and where you are now. You can write a book, right? Yes. And that's how your story is. Someday you should share your story. लेकिन अभी नहीं. मेरे साथ में जो आ रहा है ना, आई थिंक आपको याद भी होगा, मेरे से पहले उसी ने स्पीच दी थी. एंड डेली ब्रेक के टाइम पे वो मेरे साथ बैठता है, हम लोग इसी पे डिस्कस करते हैं. एंड वो भी यही बोलता है, कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ आ रहे हो. So that's how, Utkarsh. Go ahead. And I just request everyone in this room, सब तो उम्र में उससे बड़े हो, just आशीर्वाद दे दो उसे और आगे बढ़े ये आगे अपने जीवन में. He started from just a very small place. If you listen to his story, you will be amazed. Because उसने मुझे एक दिन कहा था कि सर आपको पता है हमारे घर से अगर डॉक्टर के पास जाना है ना तो हमको साइकिल पे ही जाना पड़ेगा और वो साइकिल में जाने के लिए हमको 40 से 50 मिनट लगते हैं और गारंटी ये नहीं रहता कि डॉक्टर होगा वहां पे. So from there he didn't knew how he came out of that village, how he got into the engineering college, and now he started his job. Hari Bhai played amazing role in that part. Absolutely. You remember, Utkarsh, you did not came on the first day to join the college. Hari Bhai was sitting on his name, हाँ. सीट एलोकेशन पे वही गए थे. So Hari Bhai seat allocation day, Hari Bhai बैठ के इसका allocation लिए. Hari Bhai इनको एक बार जानते भी नहीं है. I just said that, bhai, you have to do this. He did that. And this is where we see it. So, बढ़ो आगे. Everybody is blessing you. You can see that. Grow up. So become an example for everyone. अब कहते हो ना, जब गांव जाऊंगा देखना चाहिए लोग आपको. They used to tell you crazy, right? Now show them what craziness is all about. Thank you. थैंक यू सर. एक लास्ट चीज बोल के मैं एंड करूंगा. आपने अभी बोला ना कि इस बार का जो सेशन होगा वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है. उससे रिलेटेड एक विजन मुझे दिखा था, आई गेस 1 या 2 दिन पहले. आई वाज जस्ट डूइंग द जॉब
एंड मेरे को दिखता है हिमालय का पूरा एक स्ट्रिप है, उसमें लाइन से साधु सब बैठे हुए हैं, किसी एक देवता की तो पूजा हो रही है। एंड अब देवता कौन है वो तो मैं नहीं देख पाया, बट दैट वाज प्योर गोल्डन ऑरा, वो बहुत ऊपर तक गया था। तो आपने जब वो बोला तो मेरे को ये कनेक्ट हुआ, तो मैंने आपको बताया। टुडे इज अमेजिंग डे एक्चुअली। बहुत सारे लोग जानते हैं, नहीं जानते। हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ शिवा। ओके। और कल रात में हमने पूजा किया है। इट वाज जस्ट फॉर ए क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल, दे वर अलाउड टू सी इट फॉर सम टाइम, नॉट इवन द फुल। सिर्फ महानिर्वाण का ग्रुप उसको देख पाया सिर्फ 10 मिनट के लिए। सो दत्तात्रेय का कल साधना था, तो स्पेशली आई एम डूइंग ए प्रोसेस 2.5-3 hours लगे, बट वी हैव डन इट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू, सो नीड नॉट वरी। वो आपके लिए था। ओके, थैंक यू। थैंक यू। कमलेंद्र जी प्लीज अनम्यूट। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, प्रश्न पिछले हफ्ते के धवल जी के प्रश्न से उत्पन्न हुआ। अरे वाह। धवल जी जो शिव मंदिर में बैठे थे, हाँ, तो उनको ऊर्जा प्राप्त हुई वहां से मेरे को ये लगा, क्योंकि शिव मंदिर में स्थापना 2-3 तरीके से हो सकती है। एक तो मतलब किसी ने वहां पे जप किया, तप किया और शिव का अवतरण हुआ, जैसे ज्योतिर्लिंग है या जो इस तरीके से। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि शिव जी सिर्फ वो 12 ज्योतिर्लिंग में ही आए, बाकी जगह भी आ सकते हैं, आए भी होंगे बिल्कुल। ओके। और एक होता है जैसे हम मंदिर बनाते हैं, मंदिर में स्थापना करते हैं शिवलिंग की। अच्छा, अब भक्त तो राम भी था, रावण भी थे, तो मेरे को कौन से शिव मंदिर में जाके मेरी उपासना करनी है, वो कैसे मेरे को पता लगेगा? कोई आइडेंटिफिकेशन है कि भाई यस, इस तरीके का मंदिर हो तो वहां जाके पूजा करनी चाहिए? ओके, देखो, one thing is, many a times even though we do पूजा एट होम, हम घर में पूजा करने के बावजूद भी हमें कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर मंदिर जाओ, उधर जाके आओ, या तो वहां पूजा करवाओ जी। द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट, इसको पहले समझ लेते हैं, देन आई विल हेल्प यू विद द अदर पार्ट ऑफ इट। जी। तो बेसिक समझते हैं। द बेसिक रीजन इज व्हेन आई एम डूइंग ए पूजा एट माय होम, लोग पूछते हैं कई बार, स्पेशली यंगस्टर्स का, अरे तुम खुद कहते हो कि भगवान हर जगह पे है, फिर मंदिर जाके क्यों पूजा करना है? तो उनको एक चीज बताना ही जरूरी। सी, इससे पहले मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे चुका था फैन और एसी का। आज कुछ दूसरा बता देना चाहता हूं कि जब हम घर में रहते हैं तो घर में अविचार हो सकता है, some kind of wrong done deeds or something. It can be related to food, it can be related to disease, it can be related to so many things, right? Absolutely. तो कभी वो छूत अछूत फिर है, राइट? ये सारी चीजें होती है। उसके बाद क्या हो जाता है, तो कभी कभी ये क्लिष्ट हो जाता है। सो समटाइम्स हम जो घर में पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है या वो ग्रहण नहीं करता है, लेकिन कभी कभी क्लिष्ट हो जाता है। सो इन सच केसेस व्हाट हैपेंस इज, इस जगहों पे ये कहा जाता है कि मंदिर में जाओ, बिकॉज द अकरेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग इज वेरी लेस टू मियागर इन द टेम्पल। जितना अविचार हमारे घर में हो सकता है, उसे कई गुना कम हो सकता है मंदिर में। बिल्कुल। ओके, दैट इज अ टेम्पल अराउंड यू। उससे भी बढ़कर जैसे शक्तिपीठ हो गए या तो स्वयंभू मंदिर हो गए, वहां पे क्या है, उस जगह की ऊर्जा और कुछ है। अगर आपके घर के पास के मंदिर में 5% चांस है अविचार होने का, वहां वो भी नहीं होगा। वाई? बिकॉज उनको वेरी स्ट्रिक्ट रूल से फॉलो किया गया है। इट कम्स फ्रॉम ए लिनिएज, इट कम्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर वे, वो एक तरीके से होते आ रहा है, राइट? तो उस सारे जगह पे जाने से क्या होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, सब तीनों का ही खेल है ना, सत्य रज तमस। यस। तो वहां पे क्या है, वो सत्य गुण ज्यादा है। सत्य का मतलब क्या होता है, जैसे सत्संग कह लो या सतोगुण कह लो। सत्य का मतलब होता है ईश्वर। तो जहां पे सतोगुण जागृत होता है वो ईश्वर के गुण है। तो ऐसे जगहों पे क्या होता है, वहां जाके अगर आप जब ध्यान करते हो तो उससे बहुत ज्यादा फायदा ज्यादा मिलता है, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज देयर, और क्लिष्ट काम नहीं हुए हैं वहां पे।
This is the very basic thing that you can tell about people. Second thing is, आपने मुझे ये सवाल पूछा कि मैं किस मंदिर में जाके ध्यान करूं. What are the indications about that? Then let me tell you, मंदिर से भी अच्छे अच्छे जगह हैं जहां आप ध्यान कर सकते हैं. वो तो हरिद्वार होके आए हैं. वो तो हरिद्वार होके आए. और जहां ठहरे थे वहां कोई मंदिर था ही नहीं, सही. लेकिन वहां जो हुआ वो कहीं हुआ नहीं. तो ठीक है, दैट्स, लेट अस नॉट बर्न पीपल मोर. तो एक ही चीज है कमलेंद्र जी, अलग अलग साधनाओं के लिए अलग अलग जगह. जैसे अगर आप हनुमान की साधना करते हो, हर एक देवता का एक स्थान माना गया है. अगर हनुमान का आप साधना करते हो, देखो कोई भी बजरंग बाण अगर आप नॉर्मल घर में बैठ के करते हो या मंदिर में बैठ के करते हो, इफ यू रियली वांट टू डू इट, जहां पे ये बन होता है ना, बनाना ट्रीज का, जहां पे कल्चर किया जाता है, एग्रीकल्चर होता है, एक दिन जाके वहां बैठ के वही मंत्र को पढ़ो, और उसके बाद क्या हुआ वो मुझे बताना खाली आके. ओके, गॉट इट? इट इज नॉट ए टेम्पल, बट इट इज ए प्लेस वेयर ही राइड्स. ओके, जानने वाली बात यह है. दूसरी बात, बांस का पेड़, बैम्बू ट्रीज, यहाँ पे बड़ा सतर्कता से देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरीके की ऊर्जाएं रहती है. बिल्कुल. यहाँ पे या तो पूरा सात्विक ऊर्जा रहेगी या तो पूरा नकारात्मक ऊर्जा रहेगी. बट देर आर सर्टन प्लेसेस, जैसे लोग कहते हैं ना कि योगिनी साधना, योगिनी साधना अगर करना है तो उस जगह पे बैठ के करो, जबरदस्त है. उसके बाद आए बरगद का पेड़. ये सारे ऐसे ऐसे साधनाओं के लिए अलग अलग जगह है. मिट्टी के ऊपर बैठ के साधना करने से क्या होता है, सैंड के ऊपर बैठ के साधना करने से क्या होता है, जल के अंदर बैठ के साधना करने से क्या होता है, अग्नि तत्वों के बीच में बैठ के साधना करने से क्या होता है. इफ यू नो ऑल दिस थिंग्स, देन आपकी साधना बदल जाती है. मीन्स इट्स लाइक मैग्नीफाइंग एवरीथिंग. लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कहां बैठ के क्या करना है. राइट? लेट्स अगेन कमिंग बैक टू यू. लेकिन अगर आपको सिर्फ मंदिर में ही साधना करना है, मंदिर में भी साधना करने का समय मोर इम्पोर्टेंट. जैसे कल ही दत्तात्रेय जयंती गया है, आप सभी को अभी भी पता होगा जिन्होंने उनके बारे में पढ़ा है. अभी भी वो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्नान करने आते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे. ये वर्णित है, ये आप जानते हो. मैं ये खुल के बोलना नहीं चाहता, बिकॉज एवरीबॉडी शुड नॉट नो दैट. जिन्होंने उनकी साधनाएं की है या उनके बारे में पढ़ा है, इसका मतलब उन्होंने उसके लिए समय बिताया है, तो उनको पढ़ना जरूरी है, उनको जानना चाहिए. दे शुड नो अबाउट इट. लेकिन आप सबको पता है कि कौन से टाइम से कौन से टाइम के बीच में वो आते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं वो भी वर्णित है. राइट? सो व्हाट यू डू इज, अगर आप उस समय पे जाके उस नदी किनारे बैठ के साधना करते हो, देन कुछ नहीं, द सेम मंत्र दैट वी गेव यू यस्टरडे. यस. वो मंत्र पढ़ने से ही क्या होता है, घर में बैठ के पढ़ रहे हो आप, समझ रहे हो. एंड इफ यू आर सिटिंग देयर वेयर हिज ऑरा इज अवेलेबल. एंड दत्तात्रेय के बारे में मैं आई एक्चुअली वांट टू टॉक, समय आएगा तो बता देंगे. बट ये माना जाता है कि उनको याद करने मात्र से वो आ जाते हैं, इतने प्रत्यक्ष है. तो उस समय में अगर उनके जगह पे बैठ के आप वो मंत्रों का जाप करते हो ना, it would be mind blowing actually, right? Your mind cannot accept that what happened. वो सहस्र प्रकट हो जाते हैं. In any form, in any way, it will appear and you will know that it is. Okay. जैसे when I was doing the sadhana yesterday, और मैंने जब आप लोगों को कहा कि पुष्पांजलि दो, did you realize that in the middle of the time I said to take the पुष्पांजलि? किसी ने ये देखा? क्योंकि मैंने पूजा समाप्त नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा कि पुष्पांजलि हाथ में ले. बिल्कुल बिल्कुल.
Did you know what the reason behind it? पूजा कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने आपको कहा कि अभी पुष्पांजलि लो और अभी ध्यान करो, अभी अभी डालना है. Reason. Okay. Because I could see that it is sitting there. And I said, what could be a better time than doing it now? That's how it is. मंदिर में जैसे ही जाओगे मंदिर के अंदर, ठीक है कमलेंद्र जी, आप आ रहे हो क्या 29 को? हाँ. Okay. So I will share you something about energy on that day. Okay. ठीक है? When you enter to the place, just by your hand, you will realize if this energy is for you or not. Okay. ठीक है? So ये ऐसे नहीं बताया जा सकता कैमरा के ऊपर. You come and I will simply teach you something on that. Done. And just you put your hand and you will realize. आप जब मंदिर जाओगे वो पता चल जाएगा आपको कि कौन सी तरीके की ऊर्जा चल रही है यहाँ पे. ओके? जी गुरु. तो आपकी साधना वैसी रही है, बता देंगे आपको. नो प्रॉब्लम, यू माइट बी रेडी, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन. क्योंकि जब हम अभी रिसेंटली, जब पिछले बार जब हम गए थे कामकोटी, so there these people were asking me the same questions and there were 2-3 people जिनको मैंने ये बताया and I said हम धीरे धीरे मंदिर में जा रहे हैं ना, and look at what is happening in you, और कैसे कैसे बदलाव चेंज हो रहे हैं in the vibration field. They could not believe what they were able to experience there. है, लेकिन आप भी तैयार हो तो बता देंगे आप. जी. ठीक है? जी. That for sure you will know where to go, where not to. जी. धन्यवाद. ठीक है? धन्यवाद कमलेंद्र. धन्यवाद. So, लेकिन आप याद दिलाना आपका काम है. पक्का पक्का गुरु. धन्यवाद कमलेंद्र जी. Hari bhai, can you please help? Yes, ma'am. Yes. So Hari bhai, people came to know that you were sitting in the college seat at this age. किसी और के नाम पे भी सीट पे बैठे थे आप जाके. मैं? हाँ, यही होती है ना बड़े लोगों की बात, कि भूल जाते हैं अच्छा करने के बाद. नहीं, हम उत्कर्ष के बारे में बात कर रहे थे तब. अच्छा, ओके. यस. भारती देवी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Hello. Yes, you're audible. Go ahead. Yeah, namaste Guruji. Anita here from Namaskar. Yeah, Anita ji, why your name, that's what I say, why Bharati Devi ji's name is showing up. my mother's phone. Yes, I'm yes, using I know, I got it. Yeah, one second. I'm in the village. I'm sorry. No issues. So have to come to the light. Yeah, I got one question. Yes, please. Got one question. Yeah, the thing is, some people, I mean, few people, least people, able to go near to sun. I mean, some speak like gram devatas, all enter into their bodies. So is that possible? How many things they can vision our future related things, and traveling to some other places. Okay. Mainly near to sun. Okay. Other planets. Is that possible? I have to clear that. Okay. देखिए, so what especially you are mentioning is about the people going near the sun and able to know that or not, right? This particular thing happens, Anita ji, if they have studied about the Surya Siddhant. Okay, जो सूर्य सिद्धांत के the people, those who have not only studied that, they have mastered that. Okay, have you heard of somebody named as the Gandh Baba?
Very few people must have heard it, but very prominent name in the field of yogic culture. Okay, Gandh Baba was someone who was Surya Upasak the. So he was the person who was working on that Surya Siddhant, and he was always following that part of it. Yes, that kind of siddhi can be gotten by that. अगर उन्होंने सूर्य साधना की है. For example, one particular time it happened, just like you, the question that you asked, the person named Gandh Baba was asked the same question, that do you really have done the sadhana? Can you show us something? People, that's what I always say, like Anita ji, people are more interested in magic rather than understanding or knowing the beyond certain things. Unse aage nahi ja sakte, but they want some or something that. So they were asking, Acha, really you can do something like that? Okay. So he said, what do you want? So he said, one fine day I traveled to a particular place, and in that place I found a particular flower, and that flower is not available in our village. Means it is not found in this area. It is far off place. And then Gandhava says, what do you want? He said, can you bring that flower? He said, take it. You know what that means? It's very simple. Now, recently also, many might have seen, there was a video that went viral in Instagram. There is a sadhu who comes to a shop, okay? And the shopkeeper he has a long beard, okay? And he just holds his hand and he just pulls it. Nothing is there, just he puts hands in his beard. And nothing is there in his hand. And then he suddenly does like this and he says, okay, take. Flowers are there. So these things are available. These are not Indrajal, Mayajal nahi hai ye. But there are two ways. The magicians use something called as the Indrajal or Mayajal. So it will just create an illusion which is not available. You will see that. Okay. But जिन्होंने सूर्य सिद्धांत किया हुआ है और सूर्य की सिद्धि की हुई है, they know the art of changing the 5 element, structural changes at the 5 element level. So they can bring it everything. You know why his name was Gandh Baba? He can bring any kind of smell into that room. Any kind of smell. Just like in an instance. Okay. So now coming to your question. Now you have to see the कैसे बताया जाए? So have you been to someone like that? Yeah. Okay. So what did you found? Why this question appeared in front of you actually? Because when I got this question, I mean, when I have to ask, so I got this. I felt to ask. Okay, no issues. I just wanted to check the background, like where you are. This thing is coming. Actually, I have planned one question yesterday to ask after a long time, but suddenly that question got vanished. So which one I have been recalculating, but it's gone. Really, that is gone. So the new question appeared. Okay. Yeah, I mean this is not just like, but this is also in the way. I mean, in my mind. Yeah, got it. So the thing is, if these people are able to do that, means when they are talking that I can travel beyond certain planets and see that and come back and tell you what your future is, that is possible. However, look at the intricacies of it, like a little background of that person. Because there will be indications, right? If they are saying and it is happening not for once, twice or thrice, but it is continuously happening, that means they know something. Whether it is not complete knowledge about that Surya Siddhant also, but they have gotten some siddhi through which at least for a few days they can see that. They can tell you what is going to happen. Possible hai. It is just like science, Anita ji, nothing else. It's just like
We all are using a cell phone and we all are having something called as a laptop in front of us, right? In that, in the right hand corner, if you put your cursor, there is something called as the weather report. For how many days the weather is being told in that? For a week, 10 days. वो दिखाता है ना उसके अंदर. It shows the weather. What is that doing? It is also predicting. Predicting based on what? अभी बादल नहीं है, but it is saying it will rain at 1 o'clock. And now we are seeing that the accuracy of it has become so well that it is actually raining at that time. That means the device has been created in such a way it is able to capture what is going to happen based on the clues of the nature. See, certain pointers are there. Just like, let us say we don't have something called as the weather report, but I'm just a common man, and when I'm standing outside my home in the village, what I see is slowly the sky is getting darker. Cool breeze is starting to blow. And then I'm smelling the smell of the wet soil. What does that mean? That means very simple. Rain is going to happen here also. That's the indication. Similarly, when the people do these kind of sadhanas, they get the indications of all those things. Through that indication, they can say, okay, this is what it is going to happen. इसमें एक बदलाव होता है जो त्रिकालदर्शी होते हैं. There are three kind of people. One who can just tell you what is going to happen immediately in the next 3-4 days. ये एक तरीके के होते हैं. There are second kind of people, those who can only speak about your past, never about your future. But they will speak so accurately about your past that you will believe what your future is holding, because he's saying everything right about your past. Then by default you start believing them. ये क्या होता है? ये पिशाचिक साधनाएं होती है, जो especially जो very very famous कर्ण पिशाचिनी साधना. Don't do. Okay. So they will only be able to tell you the past. Then comes something very beyond. A true sage or saint kind of people. Those who have lifted themselves above these three gunas. जो त्रिगुणातीत हो चुके. Then, especially when they have gotten the blessings of the divine, then उनको कहा जाता है त्रिकालदर्शी. They know the past, they know the present, they know the future. So there will be three category of people. But yes, especially in the villages, generally, I don't see like people faking much out there. If that person has not traveled from other place to do that. You know what I mean? I'll tell you a very funny story. Is it okay? Okay, sir. There was one of my friend, and it is not story, it's a history actually. My friend, means I just came to know him when I was working in a hospital at that time, in my teenagers time, what I'm speaking of, 18, 19, when I was. So this fellow, he was a B Pharma student, okay? At that time, he was a B Pharma student, and one fine day, I said, where do you exactly go every day in the evening? He used to ride a scooter and he used to come like, very fair looking and looks like a doctor. Somehow, very, very fair. Chashma laga deke or ready. If he gets ready, he will think like a doctor. Then where do you go every evening? He says, no, I just go to the village. Why do you go to the village? No, there I have rented a home. Achha, what do you do there? No, I run a clinic. He's just a med student. And there what he is doing is, ek banner laga hua hai, doctor ye. I'll not tell you the name. But one fine day, he has to run away from the village. Why? One fine day, what happened? He had to stay back, and on that day, somebody met with an accident. They brought him to him. Now, what can he do? Because he don't know what surgery is all about. Surgical instrument chalana nahi aata. So he had to run over in the village, never to return back. Now, what does that mean? So there will be certain people, if they're traveling from far off place to show some magic in your area, then look at them very carefully again. But generally, if you see, like, they are coming from a particular background. Like, we saw that movie, Anita ji, Kantara, right? All of us have seen that. Majority of us have seen that. The reason is, वहां पे वन की जो देवी है वो वैसे ही आती है.
So it has been a tradition of it. So if it is coming in a traditional way, very rare that they will fake it, because they know the repercussions of saying wrong things or false things on the name of that goddess or god, because they know they are not leaving them. They will hit them back. So in such case, Anita ji, if that lineage is coming and it has been a place of worship for a long time, and if they are saying, nothing wrong in that. Okay. So that's how you can look into the entire thing and you see like whether it is a genuinity of things or not, or how can you refer to that. So now you have certain clues how to know that. Yeah. Okay. So do that. Go ahead. If you need any further help, please let me know. Any kind of help I can do, I will. Okay. Thank you. Thank you so much, Anita ji. Thank you. Aditi ji, please unmute. हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरे 2 सवाल है महादेव। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी उत्कर्ष ने जो बात किया उससे रिलेटेड मुझे भी कई दिनों से पूछना था, तो मैं पहले वो सवाल पूछ लेती हूँ। वो ड्रीम्स के बारे में जब बात कर रहे थे हम लोग, तो क्या ये पॉसिबल है महादेव कि जब भगवान हमें ड्रीम्स में दिखते हैं, कौन सा भी हो, तो समटाइम्स ऐसे फील होता है कि हमने उसको टच किया है, या मूर्ति हो या साकार रूप में भी हो, तो वो टच फील होता है। मीन्स केदारनाथ का शिवलिंग है, अगर वो सपने में आए तो उसका जो टेक्सचर है, वो हाथों को उसका स्पर्श समझ में आता है। या फिर कभी ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं पूछती हूँ, तब वो एक फीलिंग होता है कि जब हम हाथ लगाते हैं तो वो स्पर्श समझ में आता है कि स्पर्श हुआ है। और दूसरा ये एक्सपीरियंस है कि भगवान ने आकर कभी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है या कभी छुआ है, तो वो भी स्पर्श महसूस होता है। क्या ये इमेजिनेशन है या सच में होता है महादेव? क्योंकि वो लिटरली जब स्पर्श होता है तो उसके बाद आँख खुल जाती है, खिल जाती है महादेव। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो क्या ये मेरा ड्रीम इमेजिनेशन है या ये सच हो सकता है? नहीं, देयर इट कैन नॉट बी इमेजिनेशन। और भगवान जब छू लेता तो आंख खुल ही जाना चाहिए। ये अलग बात है कि कौन सी आंख खुली। Which eye opened up is more important. बट ये मैंने बहुत लाइवली एक्सपीरियंस लिया है बहुत। मैं इसीलिए कहता हूँ ना अदिति जी, मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ ये भगवान बड़ा, कभी कभी मेरे को लगता है कि कुछ सिखाना चाहिए उनको, जैसे हम सब सिखाते हैं ना उसको। मुझे लगता है सिखाना भी चाहिए लोगों को। कभी ना कभी तुम इसे प्यार से हाथ रखो, समझ में आएगा, आके दो लगा दो, तब समझ में आ जाएगा नहीं भगवान ही था। नहीं महादेव, जब मैंने हाथ लगाया तो महसूस हुआ, तो वो भी सच लगता है। और जब मैंने कभी हाथ नहीं लगाया लेकिन वो हाथ लगाता है, तब भी महसूस हुआ है। तो मुझे इसलिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है? I'll tell you very simple thing. It is not only in your dreams, Aditi ji. There are many people sitting in the room who have actually experienced with open eyes. With open eyes, you are just sitting, you are doing your sadhana and you feel that presence. Yes. And it is not just a presence of something is moving. It absolutely feels like somebody put their hand on your head. Yeah, Madhav. Sometimes on shoulders also. हाँ वही है, या तो कंधे के ऊपर आएगा या तो सर के ऊपर हाथ आता है। Yes. So how can you tell that अरे मैं ड्रीम कर रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ? It's very simple as that, Aditi ji. So there are certain energies that actually work. अब एक ही बात मैं बताता हूँ, पूछना चाहता हूँ। जब सारे लोग ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं उनको एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, इतने लोग इस रास्ते में क्यों हैं अगर ये सारी चीजें नहीं है तो? सारे पागल नहीं हो सकते। Everybody cannot cook up a story and tell you that, right? So that means when everyone is going through same kind of phase of experience, yet they have not shared with any other person, then how is it possible? This itself speaks loud.
कि इसका मतलब इसी तरीके से कुछ कुछ चीजें होती हैं. So Aditi ji, your question itself is the answer for that, because that experience speaks louder than anything else. हाँ, एक ही चीज कर सकते हो, अगर कभी कभी डाउट आए तो उसको पूछना कि भाई अब एक काम कर, ये पर्टिकुलर टाइम पे तू हाथ रख तो मुझे समझ में आए तू है. क्या हुआ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जुआ खेलो ना उसके साथ, गो डू ए. अरे महादेव, बट आपने तो अनकंडीशनल रहने के लिए सिखाया है ना. देन द पीपल दोज आर अनकंडीशनल, उनके लिए कोई सवाल भी नहीं है, कोई जवाब भी नहीं है. नहीं, ये सवाल के लिए नहीं था महादेव. मुझे लग रहा था कि मैं ड्रीम्स में भी माइंड गेम खेल रही हूँ क्या. मीन्स आवाज सुनाई दे सकता है, यहाँ तक सुना था, लेकिन टच भी हो सकता है और उसको महसूस भी किया जा. ये थोड़ा एग्जैजरेटिंग ऐसे लग रहा था मुझे. Why not? पर वो ड्रीम में एब्सोल्युटली आई वाज स्लीपिंग ना, ये तो मुझे पता So, था. what was sleeping, what was awake? So again, in this case, again you have to look back into a very simple concept called as the different kind of bodies that you have. आपका कारण शरीर हो गया, या आपका ये शरीर जिसमें भौतिक शरीर जिसकी बात कर रहे हो आप, या तो कॉस्मिक एनर्जी वाला शरीर जो है, दैट इज बियॉन्ड दैट ऑल्सो. So who is feeling that? मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया है ना, like when you are traveling on a bike and if there is a bar above or a pillar comes, it is 2 hand above you, but you still do like this. Why? You feel like अरे सर लग जाएगा, अरे 2 फीट ऊपर है, सर नहीं लगेगा, but you still do that. Why? That means there is some energy in you, your body, that aura field is much bigger than that. So when you are dreaming, that means your भौतिक शरीर जो है वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, लेकिन आपका आध्यात्मिक शरीर वो जागृत है. और जो आध्यात्मिक शरीर जब उसे छूता है, won't it experience that? It will. Now again a very simple testament to that. When you are standing, let's say you are standing and somebody comes near you from your behind, won't you know it? आपने देखा नहीं है, but you feel it. Why? How? Again, your aura field. That means there is something beyond your body which you are not able to see. Now your aura might be a hand length. वो commonly सबका क्या होता है, आधा. मतलब if you put your hand like this, ये जितना area है आपके circumference में, that's your aura field. But as you grow your aura field, you will be able to experience more and more things. It's not just when certain people come to a certain place, then only will know it. आप उससे पहले भी जान पाओगे. So that means there is a very clear indication that even when I am awake, that field is awake. So when this mental activity is stopped, dropped, then all that is remaining is that. And when it is experiencing it, भगवान सपने में ऐसे नहीं दिखते. सपने में पैसा दिख सकता है, भूत से दिख सकते हैं, शेर दिख सकते हैं, आप पहाड़ से गिरते हुए देख सकते हो, ये सब भौतिक चीजें हैं. But भगवान is a very typical thing. You know, the most amazing part about that is how to realize whether it is true or not. अब की बार कभी भी you will realize this. You see, जब भी आप सपने में, let's say you are dreaming and you feel like you are seeing God, बड़े ध्यान से उसको देखना. और ये मेरी बातें आपको पक्का याद रहेंगी उस समय के लिए. It is as if I will whisper you in that moment. It will happen to you. क्या होगा जानते हो, मैं बोलूंगा, बड़े ध्यान से देख इसे. Look at it very carefully. When you're looking at it very carefully, what will happen, you know, that figure that you were actually seeing will vanish. Vanish in the sense, you will feel the presence of it, but उसका जो आकार है ना वो बदल जाएगा. Mostly there won't be any, you will not be able to visualize any particular frame to that. समझ जाना वही है. It is only appearing in front of you in a particular way so that you can realize it. और सपने में भूत को देख के डर जाते हो तो भगवान के देख के क्यों नहीं मानते? मानते हो, ऑफ कोर्स मानते हैं. कितने बार पहाड़ से गिरे हैं हमको पता नहीं है. वही अचानक पैर ऐसा था, फिसल गया और हम पहाड़ से नीचे. सोते सोते हाथ रख के सो गए चेस्ट के ऊपर, आ गया काल पुरुष, उठ नहीं पाते. योर ओन हैंड. So there are things that can actually happen. So
नो वरीज, दीज थिंग्स हैपन। और जैसे मैंने कहा कि अब की बार देख लेना, लिटमस टेस्ट। और मुझे कुछ कोई मत टेस्ट मानो, लेना नहीं है। मैं वही कहता हूँ, कुछ मत मानो जब तक आप स्वयं उसे नहीं जानो। बाकी सब कहानियां हो सकती हैं, मैं 1000 कहानियां सुना सकता हूँ, लेकिन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें। वी कैन गाइड यू, बी देयर, इवन इन दैट पॉइंट देयर विल बी अ विस्पर। अब देखना, तब समझ में आएगा कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर देन व्हाट, दैट्स हाउ इट इज। एक्स, सो नेक्स्ट प्लीज। डाउट तो कुछ भी नहीं था महादेव, बस यही मुझे जो मैंने महसूस किया है, एक बार आपसे कंफर्मेशन, एक स्टैंप लगाना था उसके। नहीं, फॉर मी, नहीं, वेरी ट्रू और वेरी फ्रैंकली फॉर मी महादेव, योर वर्ड इज लास्ट। क्योंकि मैंने आपसे ही तो जाना है, समझा है, तो आप जो बोलते हैं वही मेरे लिए फुल एंड फाइनल होता है। आई नेवर doubt or I don't have any questions when you answer. So इसलिए मुझे उस बात क्लियर, आई रेस्पेक्ट दैट अदिति जी। क्योंकि 2-3 बार मैंने जब महसूस किया, और इमीडिएटली जब वो टच होता है तो नींद खुलती ही है, कौन सा भी टाइम हो वहां। और वो जो महसूस किया हुआ टच है, वो कभी नहीं भूल सकती हूँ मैं, कभी नहीं भूल सकती Yes, हूँ। that's something very typical, very different. अच्छा होगा कब जानते हो अदिति जी? वही आप सोने के आंख बंद करके जिसे देख रहे थे, आंख खोलो और वो सामने है, तब मजा आएगा। तब क्या होगा जानते हो? डर जाओगे। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? Then many people see, Aditi, I'm talking out of experience. I have seen people happening that. एक बार मेरे, I was like again in my early days, like 12-13 साल का था। I went to a particular place, वहां पे कुछ साधु थे, ठीक है, और बहुत दिनों से साधना, बहुत अच्छी साधना थी उनकी। सो वन फाइन डे वी आर इन ए, मतलब वो हट भी नहीं बोल सकते उसको, मतलब वो झाड़ के पत्ते डाल के उसको रहने लायक बनाया गया वैसा जगह था। तो वहां पे हम रात में ठहरना था, तो आई वॉज देयर बिकॉज आई वॉज डूइंग ए पर्टिकुलर साधना एट दैट टाइम, सो आई हैड टू रोम इन टू दैट प्लेस। सो उस रूम में अराउंड 4 people were there, ओके। तो वो 4 लोग जो सोए थे, उनके उनके जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि देखो ये जो आए हैं, अगर इनके साथ रह रहे हो तो कुछ होगा रात में। तो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड क्या होगा, मतलब ठीक है। सो दे आस्क्ड मी व्हाट हैपेंड, क्या होगा? मैं बोला कुछ भी नहीं होगा, तुम तो मेरे से बड़े हो सब। दे वर क्वाइट ग्रोन अप, आई वाज द यंगेस्ट देयर। सो सोने चले गए। इन द मिड ऑफ द नाइट समथिंग हैपेंड, और इन द मॉर्निंग ही नैरेटेड द एवरीथिंग। बोले क्या हुआ? तो गुरुजी, उनके गुरुजी से सुबह सुबह हम जाते हैं, सो वी वेर गोइंग टू टेक ए बाथ इन द रिवर ऑल टुगेदर। तो वो कहते हैं गुरुजी क्या हुआ? कल रात में आपने कहा था कुछ होगा। बोला क्या हुआ ना? मैंने एक्चुअली देखा, वो जिसकी साधना कर रहा था, लेट मी नॉट टेक द नेम, मैं जिसकी साधना कर रहा था, मुझे लगा कि वो सामने खड़ा है। अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्या किए? नहीं, मैं चादर डाल के सो गया। बोले चादर डाल के क्यों सो गया? नो, इतना डर गया कि चादर डाल के सो गया मैं। So this fear won't allow your God to come near you. That's, I still laugh at all those things. भाई literally ऐसे ये भी होता है, तू चादर डाल के सो गया, तेरे सामने आए तो। सो वैसे ही है अदिति जी। अब की बार इसीलिए कहते हैं ना कि जब मंदिर के अंदर जाओ तो आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के देखना उसे। इसका मतलब क्या है जानते हो? कि भगवान आंख बंद करके खाली नहीं दिखता, आंख खोल के भी दिखता है। With your open eyes you should see it. And that's where it will prove itself. I am not just a thought construct. I'm not something you can only see me in dreams. I'm standing in front of you. Then no
questions, no, ये will ever appear again. इसीलिए ना आप मुझे कितने तरीके से समझाओ भगवान है नहीं है, मैं कुछ भी नहीं सुनता हूँ, मुझे वो सुना ही नहीं देता है. आई कैन नॉट हियर दैट. आप मुझे, मैं वो इससे बार बार कहता ना, आप मुझे 1000 चीज बोलो भगवान नहीं, मैं आपको लाख चीज बोलूंगा भगवान है. That's what it has been the experience of this person. Why I'm so confidently speaking that ये हो सकता है, this is happening. The reason is very simple. I am not telling somebody else's story. That's it. So Aditi ji, and again, when you are asking this question, I absolutely agree to that. The reason is, see, it is not your question. It might be a question of some people, those who are yet to come. This might be the question of some people, those who are not yet here. Someday, somehow, see, it is going live on YouTube. We might just, this body might drop any day. But this recordings, it might be there for a long, long time. And who knows for whom you are asking. So that's why I encourage that everyone should ask right questions, so that when the people someday down the years, when they come back and they watch, and say, oh my God, he was giving answers for us. So you become the source through which this knowledge passes on. So my sincere request to every one of us has always been, please come up with such amazing questions that will create magical answers. And it does not matter. It can be a smallest of the thing to the biggest of the thing. So I literally thank everyone, with those who are coming up with questions. It does not matter how good, bad, ugly it is. Does not matter. All that matters is, for whom are you asking? So, let's see. Okay. So any other questions, Aditi ji? Yes, Mahadev. One Okay. more question is there. दूसरा सवाल, जब आपने पूछा कि अभी जो आप लास्ट लाइन बोल रहे थे कि उसको खुले आंखों से भी महसूस किया जा सकता है, नहीं, देखा जा आई एम सकता है. अबाउट, हाँ, देखा जा सकता है. आई एम अबाउट टू एब्सोल्युटली कम टू दैट पॉइंट ओनली. सेकंड क्वेश्चन Okay. यही है, कुछ दिन पहले जो मेरे साथ हुआ, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ महादेव. उससे उससे उसके ऊपर मेरा सवाल है. Okay. कुछ दिन पहले मैं कहीं जा रही थी, परीक्षा का समय था, उसके एक दिन पहले मैं कहीं जा रही थी, तो मेट्रो स्टेशन पे मैं खड़ी थी और मेरे सामने से एक बहुत लंबा, मोर देन 6.4 ऐसा एक आदमी था. जीन्स पहना हुआ था, एकदम जैकेट, टी शर्ट, सैक लेके, एक लैपटॉप का सैक जो रहता है, बैकपैक जो रहता है, वो लेके एकदम से एकदम अप टू डेट. नीचे उसका ऐसा पूरा ये था, गेटअप था, और ऊपर इतने लंबे कान, लिटरली लाइक महादेव, उसके कान मुझे ऐसे लग रहे थे कि यहाँ तक कंधे को Touch करते हैं. छुएंगे, इतने लंबे कान थे. वो उसका मुंडन किया हुआ था, यहाँ पे शेंडी था, जो ये रहता है, चोटी. हाँ, शिखा चोटी बंधन. था. और उनका चेहरा लिटरली स्वामी अक्कलकोट स्वामी के जैसे, स्वामी समर्थ के जैसे उनका चेहरा था. और वो मेरे सामने से ऐसे चले महादेव, इतना गुजबम्स आया, और मैं उनको देख के इमीडिएटली बोली, स्वामी है, स्वामी, आज स्वामी दर्शन, ये स्वामी ही है और दूसरा कोई नहीं हो सकता है, ये स्वामी समर्थ है. मैंने उनके सामने ऐसे ही हाथ, कोई कुछ भी कह ले, मैंने वो नहीं सोचा, मैंने तब हाथ जोड़ लिया उनके सामने, और मैं पागलों की जैसे मैं उनको घूर के देख रही थी. तो मैंने ऐसे सोचा कि मेरे हाथ में मोबाइल है, चलो मैं फोटो तो निकाल ही लेती हूँ. थोड़ा सा दूर जाके वो रुके थे, नेक्स्ट डोर जहां पे खुलता है मेट्रो का, वहां पे वो खड़े थे. एंड आई वाज ट्राइंग टू टेक अ फोटो ऑफ हिम, आई वाज ट्राइंग, बट वो, उनको कैसे पता चला मुझे पता नहीं, वो किसी के पीछे जाके छिप गए और बाद में दिखे ही नहीं मुझे. तो मैंने बस, मैं बोली, पता नहीं स्वामी जी, आप आए होंगे, मैं आपको खाली नमस्कार करती हूँ, मुझे पता नहीं इस मोमेंट पे क्या करना है. Very और मैंने good. वही किया, बस उतना ही Beautiful. किया. उसके बाद वो दिखे, तो लिटरली उनके कान महादेव इतने लंबे थे, इट वाज एबनॉर्मल. जो हाइट था उनका, जो फेस पे जो ग्लो था और जो पहराव था, वो बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रहे थे.
Wow. I can't express मीन्स टोटली। और उस दिन मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने मेरा रास्ता काटा है। इसका मतलब वो जो बोलते हैं कि एक मराठी में उनका सेंटेंस रहता है कि भिऊ नको मी तुझ्या पाठीशी आहे, मीन्स डोंट वरी आई एम देयर विथ यू। ऐसे बोलते हैं तो वो लिटरली ही प्रूव्ड इट। और वो सच में मेरे सामने से गुजर गए। मैंने उनको आज आंखों के सामने देखा, मुझे सच में विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो मुझे ये सवाल इसके ऊपर पूछना था महादेव की, जैसे हम अ, परमात्मा तत्व एक ही है ये मान के मानते हैं, और वैसे महसूस भी करती हूँ, अद्वैत महसूस करती हूँ कि वहां पे कोई डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं करते। मीन्स मैं आई आई डोंट नो टू टॉक अबाउट अदर्स और नॉट, पर मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी भगवान में। मैं कुछ डिफरेंस मेरे अंदर से तो नहीं होता है। मेरे Okay. लिए सब एक ही तत्व है, मैं मानती हूँ, और मुझे वो फीलिंग भी होता है। तो जैसे वो एक तत्व से काम, जो ब्लेसिंग्स हो, कृपा हो, जैसे भगवान करता है, क्या गुरु गुरु तत्व भी सब एक ही होकर वो वैसे काम करता है महादेव? मीन्स हाउ एग्जैक्टली, मीन्स मुझे ये नहीं समझ में आता कि महादेव कि मैंने स्वामी समर्थ का इतना भक्ति कभी नहीं किया है, बट बचपन से खाली थोड़ा बहुत कुछ मुझे आता है, उनके तारक मंत्र वगैरह वही उतना सा कभी कभार मैं पर भक्ति से बोल देती हूँ। या फिर हम लोग जब वहां पे जाते हैं सोलापुर में, तो मंदिर में हम लोग जाते हैं, तो वहां पे हम लोग श्रद्धा से नमस्कार वो सब करते हैं जो करना चाहिए, वो तो नॉर्मली सब लोग करते हैं। बट अगर हम, मीन्स आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं उनकी शिष्य नहीं हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग, फिर ये गुरु तत्व और उनकी कृपा और ये सब कैसे काम करता है महादेव? मीन्स हाउ इज इट कनेक्टेड टू डिवोटी? भक्त के साथ, उनके शिष्य के साथ वो कैसे कनेक्टेड रहते Okay. हैं? That's या ये very. सब लोग, सभी गुरु तत्व भी एक ही रहता है, ये एक ही तरीके से काम करते हैं, ये कैसा है परमात्मा तत्व के जैसे? Very same. Okay. चलो, बढ़िया सवाल. So let me answer you in that in a very short way. जैसे आप कहते हो कि अद्वैत, और आपने एक सही वर्ड इस्तेमाल किया, गुरु तत्व. यू डिड नॉट सेड गुरु, ये गुरु वो गुरु. यू अपने गुरु तत्व के बारे में बोले. तत्व क्या होता है? इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स कमिंग टुगेदर, राइट? सो आपने गुरु तत्व के बारे में बात की, तो गुरु तत्व जो है वो हमारा गाइडेंस करता ही रहता है. देयर विल बी अ गाइडेंस, स्पेशली व्हेन वी हैव स्टार्टेड वॉकिंग ऑन दिस पाथ, राइट? तो इस स्थान पे जब हम चलते हैं तो वो गुरु तत्व को आपके सामने प्रकट करने के लिए वो किस रूप में आते हैं? दे विल appear in a particular way where you will be able to know them. For example, as you know about this particular sage, right? स्वामी समर्थ को आप जानते हो, आपके नाम है और आपकी उस जगह में उनकी ख्याति है, और आपके भाई जो हैं वो तो लाइक ही इज एन एविड फॉलोअर ऑफ हिम, राइट? सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ये ऐसे होता है कि जस्ट टू गिव यू अ हिंट ऑफ समथिंग so that you don't miss them out. So they appear in a particular form which you are aware of. They will appear in a particular kind of energy that you can feel. Why did that name came in front of you like that? You could have said, अरे ये गौतम बुद्ध भी हो सकते हैं ना, उनके कान लंबे थे, right? क्योंकि गौतम बुद्ध के कान कंधों तक टच करते थे. But you did not think of that. That means what? It is coming as a reference point where that the tattva is moving in front of you and it said, oh, did you realize that I am here? It is nothing more scientific. I can prove you. Let's say I used a particular kind of perfume and I just passed through you. Won't you get that smell? That itself is very simple thing. जब गुरु तत्व साथ चलता है ना, तो ऐसे चीजें होना ही है. This will happen anyways. और उन्होंने कहा ना कि like you said there was a test time and it just crossed me and it said I will come, so don't worry. So what does that mean? और दूसरी बात, भगवान मेरे सामने क्रॉस करके गए, शायद मेरे आंखों ने देखा, बट डिड यू रियलाइज वेयर यू फेल्ट देम? इट नॉट योर आईज. The God did not
crossed in front of my eyes, it crossed in my heart. Where did you felt it? ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखने के लिए आप सोच सकते थे, अरे ये कौन है, ऐसा क्यों दिख रहा है? No, you didn't felt that. It's just like as if he walked on your heart. That's it. So similarly, all these kind of energies do flow, do come into play. And you know what their particular work is? लोग कभी बार पूछते हैं, आप you are keep on talking about light beings, गुरु तत्व के बारे में. What is their exact role? Their exact role is to show you the path, that what you are walking is right. And the second thing, don't worry, whatever you are going through, you are still around, still surrounded, still taken care of. These things are the greatest proof of spirituality. Blessed are you. Why not? Blessed are you. And you know what happened. Okay. Jaldi fit ho jao, bas. Okay. So any other question? नहीं वहां पे बस वही तत्व ये सब मीन्स मैंने उनको इतना कभी उनका कुछ किया नहीं महादेव, फिर भी वो कैसे कृपा करते हैं मीन्स आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. वही मीन्स आई फील टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे महादेव से लगता है आप ही उस रूप में आए थे. काश I आपने can't संकल्प जी see. को देखा नहीं है आपने अभी तक. उनका हाइट और ये बिल्कुल उसी तरीके का होना चाहिए. चलो अदिति जी, see whatever appeared, whatever happened, it sailed you through, right? That's more important. Yes. और अगर आप गलत रास्ते पे होते या गलत मार्ग पे चलते, ये सब चिन्ह नहीं आते. They don't come and appear. Let's say you have to go to Bangalore, but you are traveling towards Chennai. Would you see any signboard showing you Bangalore 250 kilometers? Or you have to go to Jammu Kashmir and you are traveling towards Kerala. Will it show Jammu Kashmir 200 kilometers, 300? No. That itself speaks that you are now in the wrong path. And all these things in the form of experience are indication that you are in the right path. That's it. Nothing more. Okay? और इसी से ना वो कहते हैं ना कि एक श्रद्धा बढ़ती है भगवान. That faith and belief recreates itself. And that's, I keep on saying all of you again and again, don't just look at your present situation and just think why. You never know what's coming. But if you are surrendered, things will be taken care of. One more Yeah. very very short and very last sharing महादेव. ये आप जैसे बोल रहे कि ये लाइव है, तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ. नहीं तो मैं आपको कॉल करके ये बात बताने वाली थी. इट्स सो पर्सनल. उस समय ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आए. वन ऑफ दैट एक्सपीरियंस, एक वो वीक में महादेव आप भी अर्ली मॉर्निंग मेरे सपने में आए. पहले आपका मैंने चेहरा देखा और थोड़े सेकंड्स के बाद आपका चेहरा कृष्ण के रूप में बदल गए. और मुझे ऐसे लग रहा था कि महादेव ऐसे नेपाली के जैसे क्यों टर्न, मीन्स उनका चेहरे से नेपाली लोगों के जैसे क्यों टर्न हो रहा है. तो वो टर्न होते होते ब्राइट होते थे, आप बिल्कुल कृष्ण के जैसे दिखने लगे और एकदम ब्राइट. आपके बाल भी घुंघराले हो गए वहां पे. और मैंने आपको बस कृष्ण के रूप में देखा महादेव कुछ पलों के लिए. और तब आपने ये डायरेक्टली बोला, आप आवाज आपका ही था कि मैं साथ में हूं, तो तू इतना किस बात के लिए सोच रही हूँ जब मैं तुम्हारे साथ हूँ. Cannot say much about it, Aditi, because there are many people in this room right now, they have such kind of experience that they cannot deny that. The thing that has happened to them now,
See, all again I say, these does not matter. Only thing that I can say is certain things will come to test you. Certain things will come to shake you up. Certain things will put you into a very distressed state. Never doubt that person. Because Ganga, गए हो ना जितने लोग, Ganga was known that she is the one who can cleanse all your sins. वो पाप से मुक्त करा सकती है. But you know what people put into that? गंदगी फेंकते हैं उसमें. That's exactly what happens to all the people, those who walk on this path. वो आए हैं आपके उद्धार के लिए, लोग उसी के अंदर मैल फेंक देते हैं. एंड देन गंदा क्या हो गया कहते हैं लोग? गंगा गंदी हो गई. देखो सोच कितना गंदा है लोगों का. गंगा मैली हो गई है कहते हैं. कैसे हुआ? गंगा तो गंगा है, वो निरंतर बहती जा रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने उसमें लाश बहाया या पुष्प, वो बहती जा रही है. और तुम हो ये कहते जा रहे हो फेंकने के बाद कि गंगा गंदी हो गई है. अरे फेंका किसने था? डिड यू रियलाइज वन थिंग? इसीलिए मैं जब गंगा के सामने खड़ा रहता हूँ ना, मुझे एक ही चीज हमेशा याद आती है, यार तू सबके उद्धार के लिए आई थी और लोग तेरा क्या कर दिए. You are still going on, flowing on, and you see what people are doing with you. Then it seems like it smiles back and it says, that's what I am, that's what they are. बिल्कुल ऐसा ही. कीचड़ हमारे ऊपर भी उठे, क्या प्रॉब्लम है? नहीं डाले क्या लोग? फिर भी क्या फर्क पड़ा? हम अभी भी है ना. So don't worry, I will not back off from my promises. हो सकता है पीपल जो स्वार्थ के लिए होगा ना, उसको परमार्थ नहीं मिलेगा. As simple as that. लेकिन जो परमार्थ के लिए होगा ना, उसका स्वार्थ कैसे ही बन जाएगा. It will be taken care of anyways. So स्वार्थ पे मत जियो, परमार्थ पे जियो. Look towards the highest self. All other things will be taken care of. And by the way, body is there. मैं तो ये मानता हूँ शरीर के जितने भी पीड़ा है, as I said, respect what it has been created, but it is also the way of my sadhana. मेरा दर्द मेरी साधना है. That's it. And I was just before this session, I love one series particularly, and I always recommend that everyone should see that. That is called as Neelkantha Varni. Neelkantha Varni, the latest 7th movie has come on him. Mind-blowing creation. You should see that. और आप उसे देखो और आपका हृदय ना पिघल जाए, ऐसा हो नहीं सकता. नीलकंठ वर्णी is no one else but स्वामी नारायण. So latest, just 3 दिन पहले रिलीज हुआ है. I have never missed any of his movies. मुझे इतना अच्छा लगता है वो. And it is available on YouTube. You can go search. I will share the link in the group because I want to people see that. कुछ इतने अच्छे चीजें हैं दुनिया में इंसान के बनाए हुए, उसे देखनी जरूरी है. You should see that. कि वो भगवान भी कभी इंसान के रूप में आके कितना सुंदर चीज बना के चला जाता. And I will say ना, I don't know how many times I have watched it. और आप, मैं वही कहता हूं, अगर आप उसे देखोगे ना, प्यार हो जाएगा आपको. आप you cannot stop watching it. You will literally wait, क्योंकि वो हर एक साल 1.5 साल में एक मूवी निकालते. My phase by phase they are, from his childhood, from his birth till to a certain age. Now he is around in his teenagers. So एक उनकी सीरीज है. मौका मिले तो मत छोड़ना. इस संसार में देखने लायक बहुत सारे चीजें हैं भगवान के बनाए हुए, ये उसमें से एक है. The narration part, the picturization, the way it has been created, I cannot tell more. You watch it and you will say why I was praising it so much. और वो देखते ही आपके मुंह से वो निकलेगा, अरे वाह क्या बनाया यार. And
Tonight I'm not going to sleep now, you know. I'm going to watch it. Okay. So Aditi, go and don't worry. Things will be taken care of. See, Batin ji I'm ने not already at all worried. वतीन जी ने शेयर भी कर दिया है, यूट्यूब पे आ चुका है. So 654K views in the last 3 days. So you should understand what the value of that movie would be. But absolutely amazing. Value है, मतलब आप उसको कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते उससे. And they are showing it for free. That's worth it. और देखना है तो स्टार्टिंग से देखना उसे. So that you come to know the entire series of it. हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी कभी उठा के देखोगे तो then also you will fall in for it. Okay, चलो. So we started with a young guy and most probably we'll end with a young guy only. चलो, चिदविलास, तुम भी मंत्र कर रहे हो क्या? तुम्हारा कोई वॉइस नहीं आ रहा है. I am not able to hear you. Is anybody else hearing his sound? चिदविलास, तुम्हारी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही. Chitras, try once again. No, I think there is an issue with your mic. हाँ, उत्कर्ष बोला परा भाषा में बात कर रहा है वो. Now try. Now, Guruji? Yes. Yes. So finally you are in Vaikhari. Guruji. So I was actually late because we actually have our college's farewell tomorrow. So I was in a group and I am singing there. So I was a little late today. I didn't even know that we have a meeting. So I would have come faster. Nah, it's okay. You came on time. That's what we were searching for. Where is the question bank? Guruji. So Okay, go ahead. bless me and my group for tomorrow, Guruji. You want blessing from only one person or the entire Oh, family? if entire group is doing, it's like a very big thing for me. किसी को आपने आशीर्वाद दिया इससे पहले जब स्टार्ट हुआ था, जब एंड हो रहा है वो मांग रहा है, दे दो. Just bless him. अरे हाथ उठाओ कम से कम. सर्दी इतनी भी नहीं हुई कि सर चद्दर के अंदर हाथ डाल के बैठे हो सब. हाँ, चलो गुड. देखो, दिल्ली वाले हाथ उठा सकते हैं तो हैदराबाद वाले उठा ही सकते हैं. So you are blessed from many places. Yes, Guruji. Yes, Guruji. So I actually have so many questions. Huh? As usual, as the last अगले time. हफ्ते मिलते हैं. चलो बाय. ये so many question पूछेगा तो मैं एक आंसर के लिए सुबह तक बैठा दूं. No, you can ask only one. Only one. For now. Next week you can ask the entire series. We will block that place for you. Okay. One question. Oh my God. How Okay. is there is so much of glow in the face of? कहाँ गई वो? अभी दिखाई भी नहीं दे रहे, भाग गई. Yes, चलो Guruji. कोई नहीं, आप ही पूछ लो. On the face of Okay. Soumya ji, that you want to ask? I have trust on you, Guruji. That will happen anyways. No questions about it. चलो क्वेश्चन पूछ लो भाई. Yes, Guruji. So this Sunday, no, last week or something, you said that there is a log to mantras. So what does it really mean? It very simply means Shiva has blocked in such a way that कोई भी मंत्र आप करो कोई काम नहीं करेगा. It won't work. It's just like a parrot saying Ram 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 Ram. It does not understand its meaning. It just everybody said around and saying it. Yes, Guruji. Or else it's just like is a fan rotating over your head now? Yeah, you're No, it's close. very well. I just turned it off.
No, it is on. No, I turned it off. If you want, I can just turn it on. Okay. Now the thing is, if you close your eyes literally, and if you listen to the voice that it is generating, Mm. and if you just focus, is it saying Om? Then you start listening to that also. Anything that Yeah. rotates make that kind of sound. So don't worry. So that means a fan is saying Om, 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 Om also. Will it get moksha? And that's how it is. So Jidila is like, coming back to your question, it's just like that. Yes, Okay. absolutely. So So like I'm sure that there is some key to that. I am not asking like what's the key. Absolutely. इसी के लिए जब भी कोई मंत्र आप करते हो ना, there is a particular विधि of doing that mantra. For example, when you will come on this day, you will see how उत्कीलन कैसे किया जा सकता है एक मंत्र को. उत्कीलन का मतलब यह है, उत्कीलन का मतलब ये नहीं है, कीलित किया गया means it has been locked. उत्कीलन मतलब opening the lock of it. So सारे मंत्र के उत्कीलन मंत्र हैं. Those who know that how to open that, they can use it. इसीलिए हर एक मंत्र को करने से पहले विधियां लिखी हुई जाती है ना, कि किस तरीके से आप करते जाओगे. मीन्स इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. या तो उवाच से शुरू होगा, मीन्स हु सेड टू हुम, देन उसका अंगन्यास होगा, करन्यास होगा, उसके बाद शिखा बंधन होगा, उसके बाद बौसठ होगा, उसके बाद उसको बोधन होगा, उसके बाद यू हैव टू कैरी इट इन दैट स्पेस. उस हिसाब से वो खुलते जाएगा. And then there is a particular way that is called as the Utkilan mantra. Mantra Utkilan process. उस समय पे क्या होता है? That lock. It's like you have a digital lock and you know 3 numbers. The 4th one is not there. Can you open it? No. So that is the 4th key to that. That opens up the pathway. So उत्कीलन किया जाता है मंत्र का. जब उत्कीलन किया जाता है, तब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है. फिर मतलब it is ready to be done the siddhi of. So, and the reason why, because all these mantras getting closed, और जिसे आप जैसे ये कर दिया गया था, बंधित कर दिया गया था, तो कीलित कर दिया गया था. The reason was because it's just like they did not wanted to give that kind of powerful things in the hand of an infant. You won't give a knife in the hands of a little kid, right? Yes. So it will do more harm to itself. Yes, of course. So that's why it said like you have to close it down. But the serious seekers, the people those who are really seeking it, for them, they will find a way. Someone will guide them. They will tell them how to do that. It's open. Yes, of course. Okay. So उत्कीलन किया जाता है मंत्र का. और उसमें कई सारे बार क्या हो जाता है ना उत्कर्ष, there is another thing that is called as जो दोष होते हैं एक एक मंत्र में. Means some flaws, some faults, some curses. So there will be there. There are many things that you have to be considered while taking up a mantra. So क्या होता है कभी कभी देखना, लोग कहते हैं मैं ये मंत्र करने के बाद मेरा सब कुछ खराब होने लगा है. Why? They have chosen the wrong one. They have chosen something that is not good for them. Or they have chosen a mantra which has been श्रापित हुआ है. इसको जो पढ़ेगा उसके अच्छाई के बगैर बुराई होगा. It's just like this. You remember like Karna and his guru? Right? So what happened? Like you all might have seen that, right? तो उनके जो गुरु थे वो कहते थे, परशुराम ही थे ना, जब वो सिखाने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि I will only teach Brahman, and he said that I am a Brahman. He said lied. So one fine day he was sitting and the guru was sleeping on his lap, and then from somewhere क्या कहते, scorpion came and it bit him. And even though the scorpion bit it, it never made any sound or moved from that place because the guru was sleeping. But what happened is drop of blood fell on the face of guru. Then he woke up, and when he woke up and he said like, what is this? This is blood. And then he clearly said, you cannot be a Brahman. The Brahman does not have that kind of strength to bear that pain. You are a Kshatriya. You lied to me. And when you lied to me, all the power that I have given you, they will all vanish when you need it the most. Yeah.
What does that mean? उसके पास सारे कलाएं थी लेकिन वो श्रापित था. Similarly, there are mantras, but mantras श्रापित हैं. मंत्र में फ्लॉज है, फॉल्ट्स है. या तो उसको बनाने के समय जैसे बनाया गया था, some people added few more things because of which it became polluted. लोग कहते हैं मंत्र भी polluted हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तुम अगर 4 देवताओं का मंत्र को जोड़ के एक यक्षिणी के मंत्र के साथ जोड़ोगे, वो रहेगा क्या? That's how खराब हो जाता है वो. Okay, so Chidvilas, yes, these things are there, and इसका पूरा संपूर्ण व्याख्या है. There is, it is not something like I'm speaking of. अगर there are reference points where you can clearly go and read it. कि these are the ways, क्यों उत्कीलित किया गया, like why this कीलित किया गया, what are the ways to do like that, and all those, everything. It is Shiva who has done that, and it's Shiva who will open it also. So yes, तो पूरा संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए जो मंत्र आप करते हो. या तो you should get it from the right people, not that university of YouTube or university of दे. अभी तो 3-4 यूनिवर्सिटी चलते हैं. Okay, so Chidvilas, yes. So did I answer your question, or you need clarity on that? No, Okay. yes, I got it. Okay, so thank you, because the reason why I want to stop is it's already 10:52. Yes, yes. And yes, literally, I request all of you, those who can come to the venue, do visit it. Do see like how things are. Haribhai is putting all his efforts. Like for the past few days, I am seeing him like, I have to ask literally, where are you? And he's not at one place anytime. He either hai, udhar hai, kidhar. And you remember on Sunday also, we could not do the session because we were too much occupied in all the things. सचिन जी, ये आपके गच्चीबौली में है, संध्या कन्वेंशन में. So anyways, हरि भाई ने ग्रुप में पोस्ट किया, एक बार देख लीजिए आप. So yes, Hari bhai, if you want to invite few people from your side, all yours. Yes. Is I'm audible? Yeah, absolutely crystal clear. Okay. Yeah, I mean, there were some couple of questions. People were confused, or they don't know that whether we can invite our friends or family members or not. Yes, definitely you can invite your friends and family members who wanted to experience that space. And we're also going live. We'll be sharing that link. One second, just a second. Yeah, okay. So fine. And even if somebody have asked you like, why you are glowing so much, you can invite those people. What's the secret? You can call them, okay, this is the secret. Yes. So there will be people who won't be able to visit us. We'll be having the live link on the YouTube. So we'll be starting somewhere around 9 o'clock. So all the participants who are sitting in the process, they need to come by 9 so that we can start the process by 9:45. So I'm inviting all the volunteers who can come little early, maybe around 6:30, 7 o'clock, so that we can make the arrangements. And I'm also having a couple of people who are coming tomorrow evening to help us in arranging. So whoever can come, please just let me know whoever coming, so that I can tell you whether to come or not for the tomorrow. If you're coming early, day after tomorrow, well and good. We have a lot of work to do. That is one point. And second thing is the old participants who are coming with the things like their mala, their potli, red potli, their mat, their Rudraksh mala, and important thing is their yantra. They need to get this promptly, because without that you won't be able to do the process. Don't forget that. And I'm also requesting you to please put a sticker at the back side, so that you don't miss out your personal yantra. Misplace that, because there will be a lot of yantras of others also. Even put a sticker on your
Havan Kund. And please get your Havan Kund also. And there are a couple of people who could not get their Havan Kund. I'm arranging that. And yes, regarding a couple of people, they said that they wanted the rooms. We have already arranged them. We'll be handovering the keys. Couple of them, they are coming tomorrow. And most of the people, they'll be coming day after tomorrow. So the people who are coming little early, yes, definitely there will be rooms where you can change the dress, the fresh up. You can change there. There will be a couple of rooms I can allocate. And there was one more question for, again, I'm telling you that for online people who have registered, this time by request of so many people, we are not sending the courier because the main yantra you have, and also most of the people, they are registering for a second time, third time, so they already have colors, they already have mat, they already have diyas, they already have copper pots, so a lot of people, they have requested not to send this. Again, I have shared the details for online participants, what are the things they need to arrange, the puja items, and also what are the things you need to procure from previously what we have sent you. And the people who are, can do online the homam. It is well and good, you can do the homam. Otherwise, you need to use the akshat, where we can visarjan it after the process, that akshantar and the other things, you can visarjan it. And if you have any questions, let me know, so that I can answer you. You can raise your hand. So the duration of the event. So from yes, 9 o'clock if they duration. come. Yeah. We are expecting to close down somewhere around 9:30 in the evening. Yes, definitely we'll be providing breaks in between. There will be a lunch, there will be a dinner with tea break. So you don't have to get anything. Any questions you have, let me know so that I can answer. So these people are clear anyways. Okay, fine. Anything is there, just ask in the group. I will share you the details. One more specific request from my side. Yes, Manaji. There are certain people, those who have done the sadhana earlier, but this time might be because of some or other thing, they're not able to attend that. One simple request would be, if you can send it through someone, or if you can just bring it there on that day, whether you're able to sit in the process or not, if you can just bring it along with yourself. It is very, very important to do that, because over the past year, it has either absorbed something that was not needed for you and has given you something that was. So these are the time of purifications. So never lose out on such opportunities. When so many people are sitting together and doing the sadhana, these things cannot be missed out. So that is one thing that I put forth. Rest up to them. Okay. So that's it, Haribhai, from my side. Yes, Manaji. Because yes, I requested some people, like they have already sent the yantra. So we'll take care of it. Okay, Manaji. Yes, Dhavalji, you can unmute yourself. Pranam, Prabhuji. So just now you said that we have to send the yantra to Hyderabad if we personally cannot. No, Dhavalji, the people because you have registered, you are doing online, right? Yes, I am doing online. So you don't have to send. The people who are not participating. Means they have done the sadhana last year or previous year or for the past 2 years. This time they are not able to do it for some reason. There might be many reasons in this way. If they are not able to do that, for those people only I'm saying. Let's say there is some mishap in the family because of which they cannot sit. Might be some health issues. So in such cases, those yantras, if you are in Hyderabad, it's pretty easy for you actually, right? So that's what Dhavalji is all about. Okay. So all the people who are doing online, they will do the sadhana anyways. वो तो हमारे साथ ही करेंगे.
हाँ Okay. ठीक है ओके थैंक यू And Chandraprakash Yes, ji, Chandraprakash, it will be all the participants should come by 9 o'clock so that we can start the process by 9:45. no, till what time he is asking? So it till you don't ask me. It will It be depends somewhere on around me. 9, 9:30, 10 नहीं maximum. नहीं नहीं भाई, वो आपका बोलने का समय है, मेरा समय अलग होता है. It's up to me. You don't have a control. वो आप जानते हो ना, ऑफिस में जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता. हमारा भी वही है. आप मर्जी से, अपने मर्जी से आओगे, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से. सिंपल. हाँ, अगर ज्यादा लगा तो उठ के चले जाओ, नो प्रॉब्लम. सो हरि भाई, आई डोंट गिव एनी गारंटी. 21 दिन का प्रोसेस को एक दिन में लेके आया, उसके ऊपर कट शॉट चाहिए तो कुछ नहीं कर सकता. सो वैसे भी जितना समय, अगर इफ आई से द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन दैट द मोर यू गेट. सब तैयार. चलो कोई बात नहीं. नो, ऑन द अदर साइड, आई देखो देखो, इसने फिर चंद्रप्रकाश जी ने फिर भी एक लिमिट लगा दिया, 1 बजे तक ही रुक पाएंगे बोल रहे हैं. ठीक है, हम उसके ज्यादा खींचेंगे उसको. नहीं चलो कोई बात नहीं. हरि भाई हैज स्पेशली रिक्वेस्टेड दैट पीपल हैव टू ट्रैवल बैक, सो let us complete within a short span of time. We'll try that. So anyways, thank you. So I believe like all the people are aware of it, and we are all excited to see you out there. Hari Bhai is putting all his efforts, and all the people in the background, they're putting all their efforts to make it absolutely another level up kind of thing. And as I said, this time you should see the image. Okay, so thank you everyone, and it was only possible because of all of you. So may the blessing of the divine always be there on of us. आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर उस दिव्य देवता का हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे. So may you all be blessed. Thank you so much. See you again, not just live but in front. Aham Brahmasmi. Thank you, Manaji.